Good evening, everyone, ladies and gentlemen. It is with great pride and the deep sense of purpose that I extend a very warm welcome to all of you to the inaugural session of our continuing education program, 4 days program on approaches to tangible and intangible assets valuation in India and practical case studies. Today is not merely the commencement of a program. It is the beginning of a meaningful journey, a journey that seeks to seamless integrate academic rigor with real-world application, addressing the complexities and evolving dynamic and tangible asset valuation in Indian context. Asset valuation, as we all appreciate, is both an art and a science. While internationally recognized methodologies such as income approach, market approach, and cost approach provide a robust technical framework, other applications with Indian demands far more than formula. Our market presents a distinctive blend of crucial diversity, regularity, transformation, rapid urbanization, informal market structures, and pronounced regional socio-economical variations. India's property landscape is as diverse and dynamic as the nation itself. From the ever-vibrant metropolitan hubs of Mumbai, Delhi, and Bangalore, to the rapidly emerging Tier 2 and Tier 3 cities shaped by smart infrastructure and new development models, each micro market tells a unique story. True valuations, therefore, goes beyond numbers. It requires the understanding of land, people, buyer behavior, policy intent, and market sentiment. This program has been thoroughly and thoughtfully designed to address exactly that. Over the coming sessions, participants will engage with real-world case studies, explore international valuation standards, IVS, alongside Indian valuation standards, and most importantly, learn how to apply these frameworks effectively within India's local and regulatory environment. In closing, I would like to emphasize that assets are not merely land and buildings, plant and machinery, and securities or financial assets. They represent people, aspirations, livelihoods, and future possibilities. Accurate and ethical valuations lies at the core of sustainable development, reasonable investment, transparent governance, and intelligent urban planning. Thank you once again for your patience and presence and participation. I wish you all a deeply enriching and rewarding learning experience. Thank you very much. And with this, I would like to request Dr. Rajvinder sir to please continue with the session. Please mute yourself. Thank you, Sandeep ji. And very warm welcome to all the participants. So, as Sandeep ji have told, during these sessions, we will be discussing certain practical problems, practical types of real world examples, which are very important from our day-to-day evaluation. In today's session, we will be discussing how to calculate undivided share of land. So first we will discuss about what is undivided share, how it is calculated. Then we will take a real world example that how we should apply this thing our valuation process. So basically undivided share is generally there in
apartments or multi-storied buildings which are having certain common facilities. So, as far as the Indian context is concerned, you have to do many times the valuation of apartments in which undivided share of land is one part, and that is an important thing. So first thing is we will discuss how will you calculate that undivided share for a particular apartment, and then we will proceed with the examples, then how to value that part. So basically what happens in Indian scenario, that when you buy an apartment in a multi-story building, you are buying a flat, but that flat does not hold exclusive title to any specific portion of land beneath that building. उस बिल्डिंग के नीचे जो लैंड है उसका कोई exclusive title, you do not buy that. So basically what happens is that each flat owner holds a proportionate. First thing is, what happens is that each flat owner holds a proportionate. Second thing is undivided, and third thing is inseparable interest in the land. There are three things linked to this undivided share. First thing is it is proportionate. Second thing is it is undivided, and the third thing is it is inseparable interest, which is registered along with the superstructure. So whenever you got registered a flat, you got certain part of superstructure in the registered deed, and another thing you got, so that superstructure part is you are having a particular part, you know, it is separate from other parts, but the build land which is beneath that building, that is not inseparable. That is inseparable, that is undivided, that is proportionate interest in the land you are having. So this undivided share of land is a bedrock of apartment valuation. So many times you have to do valuation for the banking purposes. You may have to do the valuation for bank mortgage. You may have to do the valuation for stamp duty purposes. So whenever someone buy a flat and he have to got registered his deed, he have to pay certain stamp duty, and that stamp duty is to be paid on the building part plus on the undivided share of land part. And you are, as a valuer, you have to find that undivided share of land, and you may have to do the valuation for bank mortgage purposes. And many times what happens is that you know these things: FSI utilization and redevelopment potential. So what is this FSI utilization? So let us suppose FSI for a particular apartment is 4. In a particular area, let us suppose that FSI is 4. It means if you are having a plot of 100 square meter, you can have a superstructure of 400 square meter.
That is what FSI means. Now let us suppose instead of FSI of 4, at present the FSI is 3.84 or 3.5, let us suppose. Instead of 100 square meter, 400 square meter, the builder has built 350 square meter. So there are two things now. You are having undivided share of land based upon FSI basically, of which 3.5 FSI has been utilized, but still 0.5 FSI is underutilized. And of that 0.5 FSI, the owner of the flat is having share in that part also. In that redevelopment potential part also, if you are buying a flat in an apartment, you are not having undivided share of land on the basis of actual FSI. Basically, will be having undivided share of land on the basis of actual FSI, but you may be having additional additional square feet of undivided share of land if it is having underutilization of FSI. That may be mentioned in the sale deed. It depends upon the type. In the state to state, it varies from the state to states. Different states are having different criteria for mentioning undivided share of land. It may be on the basis of actual FSI which has been used, or it may be having the permissible FSI, of which it may be written that at present the undivided share of land is so much, but on the basis of redevelopment potential, an additional undivided share of land is so much. We will be taking an example that will make this thing clear to you. So this is where, as a valuer, you have to be very much conversant with these things, how to calculate that undivided share of land. So first of all, as we have already discussed, we should know what is undivided share of land if we take it from the legal and conceptual point of view. So undivided share of land, as we have already discussed, it refers to proportionate. Second thing is notional entitlement of co-owner. Third thing is, in this context, an apartment purchaser, basically an apartment purchaser is a co-owner of the land over which this apartment has been constructed. So the total land of parcel on which multi-unit residential or commercial building stands. So it is basically notional entitlement. Means there are number of co-owners which are having entitlement over this parcel of land. So what this word undivided means? The word undivided is critical. Means no individual flat owner can point to a specific physical strip of land. So no one can say that I am owner of this particular strip of land. So he is having share in overall parcel of the land, not a particular strip of land, as in the case of a building, simple building in which you are having certain part of land which you can say that this is part of my land. But in case of apartment, you cannot say that this particular strip of land belongs to me.
ठीक है. So he cannot exclusively claim a particular strip of land. So the owner is, so basically the ownership is, so you must understand this thing, that the ownership is abstract mathematically. Mathematically you have certain value in that particular land, and it is inseparable from the other co-owner's interest. So you have mathematical value only. So you cannot separate it from other co-owners' interests. So basically, it is mentioned in Undivided Share of Land. It is mentioned in Transfer of Property Act 1882, Section 44 to 53 deals with it, of Registration Act 1908. So basically, each state is having its own apartment ownership act. For example, if we take Tamil Nadu has the Tamil Nadu Apartment Ownership Act 1994. If we take the example of Karnataka, it is having Karnataka Apartment Act Ownership Act 1972. And similarly, Maharashtra, it is having Apartment Ownership Act 1970. And other states, similarly, Andhra Pradesh, Telangana, they are having their own Apartment Act. So basically, what happens? These statutes mandates that sale deed for each flat must explicitly state UDS being transferred. So this is the important thing which you have to check, that how much UDS, undivided share of land, each plat is having. It has to be mentioned in the sale deed. And if it is not mentioned, see here, according to these apartment acts, if this undivided share of land is not mentioned particularly, then failing which the document may be treated as incomplete for registration purposes. That is an important thing. You have to check when you are doing valuation of an apartment. First thing you have to check is the registered sale deed, and you have to check how much undivided share of land has been mentioned there. So from a valuation point of view, we can say that undivided share of land component embedded within overall value of the apartment. So when you are doing a valuation, you may be doing valuation for fair, you may be finding fair market value of the property. But if you are doing valuation for certain banking mortgage purposes, there you may have to find or mention forced sale value of the property, as in the case of Surface Act, if you are doing valuation under Surface Act 2002. Or you may do valuation for stamp duty purposes, or for balance sheet reporting under Indian accounting standard, which is done under accounting standard 40. So it will depend upon for what purpose you are doing valuation. So the value of UDS will again depend upon for what purpose you are doing valuation. Were you doing valuation under Surface Act 2010, or you are doing valuation for stamp duty purposes, or you are doing it for balance sheet purposes reporting under Indian Accounting Standard 40, or you are doing valuation for land cost element that is capitalized. If you are doing for capital gain purposes, then you may have to do valuation for land cost element. And in that case, you have to do it, find the land cost element which has to be capitalized.
separately because the building part will be depreciated and this land cost part will not be depreciated if you are doing valuation for capital gain purposes. So as we have already discussed, this undivided share of land, as far as Indian context is concerned, all flat owners collectively hold the land as co-owners under the Indian law of co-tenancy. No partition suits lies for division of land in a registered apartment complex as long as the building stands. That you have to remember. So basically, when you are doing valuation, here the basic principle applied is proportionality principle. Means on the basis of built up area, you have to calculate on the basis of maybe calculating in the on the basis of built up area, you may be calculating it on the basis of carpet area. It will depend upon that. So UDS is allocated proportionally, most commonly based upon the ratio of individual flats carpet area or built up area to the total built up area of project. So it may be, if you are taking built up area of the flat, then you have to take total built up area of the project. If you are taking carpet area of the flat, then you have to take total carpet area of the project. So numerator and denominator should be same. It is not that on the numerator you are taking carpet area and in the denominator you are taking total built up area. Both of them should be taken same. If you are taking carpet area in the numerator, then in the denominator there should be carpet area, total carpet area. That thing you have to remember. So these things will be clear when we will be taking example. As of now, you must understand that it is either based upon the carpet area or on the basis of the built up area. But remember, numerator and denominator should be same. Then we have already discussed that UDS cannot be sold independently of the apartment's superstructure. Superstructure part and UDS is sold collectively. They cannot be sold separately. So land and building together constitute one indivisible unit of sale. So on the basis of that indivisible unit, it may be sale, leasing, mortgage under Indian conveyancing फ्रेंड्स, ये practice. आपको ख्याल रखना है, अगर कोई भी अपार्टमेंट या फ्लैट या डिविजिबल यूनिट की आप वैल्यू कर रहे हैं फ्लोर वाइज, तो आपको यूडीएस डिक्लेयर करना ही करना है. एज पर रेरा भी कंपल्शन है, सेल डीड में भी कंपल्शन है. और अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करते और वैल्यूएशन में इसको मेंशन नहीं करते यूडीएस को, देन यू कैन बी इन ट्रबल. क्योंकि अभी एक कोर्ट की तरफ से एक नोटिस आया है हमारे एक वैल्यूअर को, हालांकि वो हमारा मेंबर नहीं है, लेकिन उसने हमसे हेल्प मांगी है टू डिफेंड इन द कोर्ट. क्या क्या उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो हमसे मांग रहा है. लेकिन अगर आप रूट लेवल पर ही गलती करेंगे तो हम भी आपकी क्या मदद कर सकते हैं. अगर आप रिपोर्ट बनाते वक्त ही केयर नहीं करेंगे और बाद में बोलेंगे आप इसका सोल्यूशन बताइए, व्हाट कैन वी हेल्प, वेयर कैन वी डिफेंड यू. तो अगर आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अगर आप उसको प्रॉपरली हैंडल करते हैं यूडीएस को या इन चीजों को, और अभी ये बहुत बहुत जरूरी है यूडीएस आपको, अगर आप किसी भी अपार्टमेंट की डिविजिबल यूनिट की फ्लोर वाइज वैल्यू कर रहे हैं तो आपको यूडीएस डिक्लेयर करना ही करना है. और डीड में भी कंपल्शन है, डीड कराते वक्त भी कंपल्शन है. अगर नहीं है तो आप उनको बोलिए आप इसमें अमेंडमेंट करा कर दीजिए, अदरवाइज उसको हाथ मत लगाइए. That's why this topic is being taken in this particular session. Over to you, sir. Please continue. May I come in, sir? Yes, sir. Sir, if you see, there are so many difficulties in calculating the UDS because this FSI depends on the policy of the government.
if in the intervening period while the implementing the project or the completion of the project, if the FSI is increased from 3 to 3.5, then the difficulty will be there in calculating the UDS. Number two, their FSI is in modern time also linked with the uh, renewable energy used in the project. So when we calculate it for a additional FSI, that may be up to 0.5% of the FSI, FSI. How it will be calculated is very complicated. And Sir, moreover, in most of the sir, registering just authority, it's a specified rate for a flats and the dwelling units is a specified on the square foot of the covered area. sir, just hold on. We will be taking an example that will make when we will be completing that example that all these doubts will be cleared. Just For hold टाइम on. बीइंग We are तहसील जी आप starting. याद रखिए फॉर द टाइम बीइंग के वैल्यूएशन जिस दिन आप दे रहे हैं उस दिन के लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं, बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू सर? सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। अभी हमने खत्म नहीं किया, अभी चल रहा है सर। वो सारी चीजें जो आपके डाउट्स हैं दैट विल बी क्लियर्ड व्हेन वी विल बी टेकिंग एन एग्जांपल। We will be taking a real world example and all the things will be clear to you, Sir Semjanji. Don't worry. Second thing is, first thing is inseparability. Second thing is that every state is having its own statute, on procedure of mentioning UDS in the sale deed. So India doesn't have a single central statute that prescribes uniform formula for UDS calculation. So that is where the problem rises. So the methodology is derived from a combination of statutes. So it is derived from a combination of statute, judicial precedents, registration department guidelines, and developer practice. However, the following regulatory instruments collectively shape how UDS is complex. First, see here. Now, the same Chanji, just hold on. See here how we calculate that UDS. What documents you have to check? What things you have to check? First thing is State Apartment Ownership Act. So when you are doing evaluation, each state is having its own statute for calculating, for mentioning UDS. It may be different in Karnataka, it may be different in Tamil Nadu, it may be different. Each state is having its own procedure. So each state apartment act mandates that developers specify UDS in the conveyance deed. Now, where the problem rises? For example, in case of Tamil Nadu, what it says it requires percentage share in each unit's owner to the total land to be stated in the schedule A of the sale. Percentage share of each unit owner. Here, how the UDS is to be mentioned as far as the Tamil Nadu statute is concerned, it has to be mentioned in percentage. What percentage? Percentage share of each unit owner to the total land area. This is how it is to be mentioned. It may be different in the state where you are residing, where you are doing valuation. So you have to check the statute of that particular state where you are doing valuation. This is the first thing. And second thing is, as of now, RERA 2016. So basically it deals with carpet area. Instead of percentage of share, here it comes carpet area. We do calculation if you are doing valuation, and in case of RERA Act, every calculation is to be done on the basis of carpet area. And again, the definition of carpet area is different for RERA, and it is different if you calculate it from Indian standards, Bureau of Indian Standards codes. Their definition of carpet area is different. There, in case of if you calculate the value carpet area on the basis of Indian standard 3370,
Carpet area is the area where you can lay carpet. Means you have to detect the area of bathroom, kitchen, and other parts. But here they take the internal area, floor area of a flat. So you have to check how to calculate carpet area on the basis of RERA 2016. So RERA mandates that registered developers disclose total land area. What do they have to mention? First thing is total land area, carpet area of each unit, and proportionate UDS in the sale agreement and disclosure. And if this thing is not mentioned, it is prosecutable under section 61. So first check the statute of the state. Second, if you are doing valuation and that the project is RERA registered, here in case, then you have to check the sale deed. And of course, in the sale deed, these things have to be mentioned. Total land area of the project, carpet area of each unit or that particular unit, and proportionate UDS in the sale agreement. And then you have to check sub-registrar guidelines. Maybe then a particular area of the state sub-registrar are having different guidelines for mentioning UDS. So state registration department issues guideline on acceptable methods of UDS calculation for stamp duty computation. See here. For example, in Tamil Nadu, guideline value per square feet of UDS land is applied on UDS area stated in the document. And then if you are doing valuation for income tax purposes under section 56 and 52, 56 subsection 2, for income tax purposes, the stamp duty value of UDS is used as a deemed sale consideration. So what is mentioned in the sale consideration? So for that, making UDS computation is critical to avoid deemed income additions under section 56(2), where consideration is below stamp duty value. So we will discuss these things in the coming slides, how it is affected if the value, stamp duty value is mentioned below the market value, then how to proceed in that case. So as far as valuation standards are concerned, you know, if you are doing valuation for IBBI or if you are a IBBI registered valuer, so you either you have to use international valuation standard or the valuation standard of your particular RVO, as in your case it is CEV IAF RVO. So you can use that standards. So how now we will discuss how this UDS is calculated. First method is proportionate built-up area. So it is based upon the built-up area basis. So UDS is allocated as in the ratio of each apartment's built-up area. First, you know, have to calculate built-up area. You should know the total built-up area of the apartment of all the project, all apartments in the project. For example, formula which you will be using, UDS in square feet, it is equals to individual flat built-up area divided by total built-up area of all flats multiplied by total land area. So what is this total land area divided by total built-up area basically?
total land area divided by total built up area of all flats. What is this? स्पेशली आर्किटेक्ट्स कोई जवाब दे पाएंगे? बहुत सिंपल है, थोड़ा जागते रहिए बस। FAR. So it is FAR, FSI. So basically it is individual flat up built up area divided by FSI. That is the formula you have been using in joint venture ratio. Now see here, in the first method here it is built up area which is most commonly used. But nowadays with the advent of RERA 2016, this built up area has been replaced with carpet area. So instead of built up area, you may be taking carpet area. So here, see here, the formula will be changing. The formula will be individual flat carpet area divided by total carpet area of all flats, and of course multiplied by total land area. So see here, if you are using carpet area in the numerator, in the denominator it should be carpet area. And if you are using built up area in the numerator, denominator should also be total built up area. That is a proportionate method. So it is either based upon the built up area or based upon the carpet area. So nowadays this is most commonly used, proportionate carpet area. So next is the third method, which is rarely used, which was used before the advent of this UDS. So where some older cooperative housing societies and small plot development allocates equal UDS to all the units irrespective of the size. It was prevalent before that thing. So this method, this procedure is not being used nowadays, but in the olden times, it was that equal share was given to all the flat owners irrespective of the size of the flat. That is equal share, which is rarely used. So see here now, the same Janji, what you have to use, where you have to concentrate. So always verify the method used in the original sale deed. So you have to use that method. You cannot apply your own method. If it is proportionate to the carpet area, use proportionate to the carpet area. If it is mentioned as proportionate to the built-up area, then use that. So always verify the method used in the original sale deed. If you are using different method in revaluation without justification, it may result in the discrepancy. Especially with the stamp duty authorities computation expose the client to a demand notice under section 47A of registration. So be clear that you have to choose the same method which has been used in the original registered sale deed. देखिए, तरसेम सर ने बहुत ही रेलेवेंट और बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा था, और उसका आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, और सबके लिए बेनिफिशियल है कि कैसे करेंगे। देखिए, एक रेरा के आने से पहले काफी स्टेट्स थे जहां पर यूडीएस सेल डीड में लिखना कंपल्शन नहीं था। स्पेशली पंजाब अगर देखें, जहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट्स या दूसरे अपार्टमेंट एक्ट्स वगैरह नहीं चलते थे, तो फ्लैट ओनर्स के पास सिर्फ एक रजिस्ट्री रहती थी, दैट वाज जस्ट अ ऑक्यूपेशन डॉक्यूमेंट। उसमें यूडीएस कहीं भी नहीं था, उनका लैंड में कोई भी हिस्सा नहीं कोई भी मेंशन करता था फ्लैट्स में। और ज्यादातर रजिस्ट्रियां, जैसे तरसेम सर ने बताया, सुपर बिल्टअप एरिया के बेस पर होती थी, जिसमें कॉमन एरियाज और दूसरे वो ऐड कर देते थे, जो अनप्रोपोर्शनेट होते थे, कभी वो होते ही नहीं थे। तो उसके बाद रेरा के बाद ये कंपल्शन हो गया। इवन आप देखें, अगर महाराष्ट्र या गुजरात साइड में ये चीज काफी पहले से ही चल रही है,
काफी पहले से ही अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड वहां पर डिस्क्लोज होता है, लेकिन जैसे सर ने बताया थर्ड जो ऑप्शन था उस ऑप्शन के हिसाब से मेंशन होता था। तो अभी हमारे पास जब हम वैल्यूएशन करने जाते हैं, हमारे पास अपने पास खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है कुछ भी चैलेंज करने की। जो सेल डीड में दिया गया है, जैसा सर ने बताया, हमें उसको उठाकर उसको इनकॉर्पोरेट करना है। अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हम अपना नीचे एक पर्टिकुलर एविडेंस के साथ नीचे मेंशन कर सकते हैं कि एज पर रेरा इस पर्टिकुलर स्टेट में, इस पर्टिकुलर सिटी में ये इस हिसाब से यूडीएस कैलकुलेट होगा। हाउएवर जो सेल डीड में है उसमें इस तरह से मेंशन किया गया है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आप अपना नोटिंग और जस्टिफिकेशन वहां पर दे देंगे तो आप फ्यूचर लिटिगेशन से बच जाएंगे। ओवर टू यू सर। थैंक्स। Okay, thank you, Sandeep ji, for your valuable input. So now we will be uh, having an example, real world example that will make your doubts clear. So we are having an example, Prestige Elara, a residential apartment complex in Chennai, Tamil Nadu. We are taking an example. So to ground the valuation methodology in real world numbers, this guide uses detailed, fictitious but realistic project. This is just a fictitious, and this is not an actual valuation, but this is just an example for all of you to make the things understand. It is situated. जैसा जैसा आप टीवी में देखते हैं ना, इस कहानी का नाम, स्थान और उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वही सर यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर दे रहे हैं। इट इज जस्ट अ फिक्टिशियस एग्जांपल। यस सर, ओवर टू यू। So it is a mid to premier residential development in Sholinigar, Chennai. All figures are calibrated to current market conditions in Old Mahabalipuram Road, OMR corridor as of 2024, is presenting a project that a practitioner might actually encounter in a bank mortgage or litigation assignment. So this is the data of the project. The project name is Prestige Lara. It is situated in Chennai. A survey number of the project 142 upon 3B, and then total extent of land is 37,500 square feet. So this is what you need to know at least. It is total land extent. It is 37,500 square feet, approximately 0.86 acres. It is having number of blocks. There are two blocks. Block A, it is having 9 floors, and block B again 9 floors. And then total number of apartments, there are 120 units there. Out of this 120, there are 42 BHK units which are having a built up area of 1050 square feet each. Then 60 units of 3 BHK having a built up area of 1450 square feet each. And then 20 units of 4 BHK having an area of 2100 square feet built up area each. So total built up area is 1,71,000 square feet. Then FSI consumed is 3.84 and permitted FSI for the zone is 4. Then land guideline value of that particular area is 8,500 square feet as per current SR of guideline value, sub-registrar office guideline value. Land market value from the comparable sales is 12,200 per square feet, as we have calculated from the comparable sales analysis. Construction cost is approximately 3,200 per square feet of built-up area. And the value of which you have to do is a valuation of flat number B704, which is located at 7th floor of block B. It is a 3 BHK unit having a built up area of 1450 square feet.
This is the data which you have, which is known to you. You have collected, which is known to you. देखिए, एक जनरल क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक पूछना चाहता हूँ, जो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने काफी वैल्यूएशंस की हैं बैंकिंग सेक्टर में, हम लोग ऑलमोस्ट मंथ में 3 या 4 फ्लैट्स की वैल्यूएशन आप जरूर करते होंगे और की भी होंगी। और आजकल क्योंकि फ्लैट कल्चर ऑलमोस्ट सभी सिटीज में पॉपुलर हो गया है, आपके लिए रेगुलर डे टू डे वर्क होगा। क्या आपने आज तक उस फ्लैट की वैल्यूएशन करने के लिए टोटल एक्सटेंड ऑफ लैंड पूछा है या काउंट किया है? नहीं की। ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि हम जाते हैं, उस पर्टिकुलर फ्लैट को देखते हैं, उसके आसपास फैसिलिटीज देखते हैं, फ्लैट का एरिया, कारपेट एरिया, वट एवर इट इज, जो डीड में लिखा है उसको टैली करते हैं, उसका नक्शा लेते हैं और वैल्यूएशन के लिए घर आकर शुरू हो जाते हैं। यहां पर सबसे बड़ी गलती आप करते हैं, दैट कैन बी चैलेंजेबल नाउ। अभी तक कुछ जगह पर चैलेंज किया जा चुका है, लेकिन अब वो चैलेंज होना शुरू हो गया है, आपकी रिपोर्ट को चैलेंज करना शुरू कर दिया गया है। तो ये सबसे की पॉइंट है हमारा ये पर्टिकुलर सेशन लेने का, कि आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज करते वक्त ये चीजें पता हो कि क्या क्या मुझे डाटा इकट्ठा करना है, चेकलिस्ट क्या है। एक आपको चेकलिस्ट की एक, अगर आपने देखा होगा, एक वीडियो भी रिलीज की गई थी, एक आर्टिकल भी रिलीज किया गया, वैल्यूएशन चेकलिस्ट, कि आप जब साइट पर जाते हैं तो मिनिमम क्या क्या डाटा आपको वहां से लेकर आना है। वहां पर आप जैसे फोन आता है, फटाफट सबसे पहले, जैसे अभी इसराइल ने एटम बम फोड़ देना, फटाफट भाग के जाते हैं, देखते हैं 5-7-10 मिनट लगाते हैं, या आप किसी नॉर्मली, मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि वहां पर जाने के बाद जितना डाटा आपको मिलता है, डाटा इकट्ठा करते हैं, ऑफिस में आ जाते हैं, ऑफिस में बैठ के सारे काम करते हैं। दैट इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन। आपको मैक्सिमम चेकलिस्ट आपको साइट पर ही इकट्ठी करनी है। अभी तक ये सारी चीजें हिडन थी, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज के लिए धीरे धीरे चैलेंज होना शुरू हो गया है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारा मेंबर उस पर्टिकुलर चीज के अंदर फंसे, या फंसने की किसी वजह से फंस जाने की प्रॉब्लम उसको आ जाए। तो पहले ही आप ये चीज चेकलिस्ट नोट करके जाएं, और ये सारा डाटा ऑन द स्पॉट आप वहां से कलेक्ट करिए। उसके बाद वापस आके कैलकुलेशन तो होती रहेगी, वो तो आपके लिए 15 या 20 मिनट या आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं। चेकलिस्ट फॉर वैल्यूएशन मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं, इसलिए कि आपके माइंड में वो चीज एक पूरी की पूरी जम जाए। चेकलिस्ट जरूर होनी चाहिए हर तरह की वैल्यूएशन की, और उसके लिए एक आपको आर्टिकल दिया गया, आप उसको गो थ्रू हो जाइए और उसके हिसाब से अपनी चेकलिस्ट जरूर डेवलप करिए। वेदर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं या फिजिकली कर सकते हैं, आप एक डाटा शीट बना सकते हैं एक्सेल में। ओवर टू यू सर, थैंक यू। Thank you, Sandeep ji. So, first of all, whenever you are to do the valuation, first thing you have to check that total built up area. See here, you know there are 40 flats of 1050 square feet, 2 BHK flats. So 40 into 1000, 1050, it is 42,000 square feet built up area. Similarly, 3 BHK flats, there are 60 flats having area of 1450, 87,000. And 4 BHK 20 flats, 2100, area is 42,000. So total area 1,71,000. So valuer must rely on these figures as stated in the registered sale deed and cross-verified against the RERA filing of the project. So basically, whenever you are doing valuation of a flat, you go to the RERA site of your state of you which you are doing valuation, and there each and everything is given, uploaded by the developer. All these details are there on the website of RERA for that particular project, and you have to verify that whether the things which are given to you are same, that is what is uploaded on the RERA site. That is your duty to verify. So as a valuer, first of all, when you are doing valuation, go to the RERA site of website of your that particular state, and from there you can find that particular project, and that
each and every detail which they have mentioned to the authorities are mentioned. Of course, what are the types of facilities, what are the things are present there, which should be present there. Each and everything is mentioned there. That you have to check, and from where you can verify that the area is also 1,71,000 or not. That is an important thing. So whenever you are doing valuation of a flat, just verify the details which you have got from the owner or from the developer with the RERA side. So after going through verifying that the area is 1,71,000. So as we have already discussed that either we should use built-up area or carpet area. So some developers include super built-up area in the sale deeds. Instead of built-up area, they mention super built-up area. It depends upon state to state. So because in the common areas also, the owner is having share. So if it is super built-up area instead of built-up area, so here there will be some variation in the undivided share of land. Marginally, that figure reduces per unit area used for rate comparison. So it will depend upon. So practitioner should ensure that internal consistency. If we are same area basis must be used in both numerator and denominator. If you are using built-up area in the numerator, it should be built-up area in the denominator. If it is super built-up area in the numerator, there should be super built-up area, total super built-up area in the denominator. That is important thing. If it is carpet area in the numerator, it should be total carpet area in the denominator. So now we will be calculating undivided share of land for flat numbers B74. So you know this built-up area is 1,450 square feet. Total built-up area is 37,500 square feet. Total land area you know is 1,71,000. So you know the formula UDS is equals to individual built-up area divided by total project built-up area multiplied by total area of the land. So built-up area is 1,450 divided by 1,71,000 into 37,500. You calculate, it comes out to be 0.00848%, means 0.848%. So 0.848% of what? 37,500. So it comes out to be 318.01 square feet. This is how you can calculate. If it was carpet area or super built up area, the same numerator and denominator should be there. You put all the values, you calculate, so the undivided share of the land. So this is for this particular flat. Hello. So the undivided share of land is 318.01 square feet. So you can round it up to 318 square feet as mentioned in the sale deed. So that means out of 37,500 square feet of land, this is the total area of the land. Flat number B704's owner has 0.8480 undivided, proportionate and inseparable co-ownership interest. So this thing will clear your what is this undivided share of land. यहाँ से clear हो गया होगा.
What it means the other 119 flat owners collectively hold the remaining 99.152% of the land. Clear as this? So you can check it. See here, for all 3 BHK flats, there are 60 flats multiplied by 318. Total area comes out to be 19,080 square feet. For 2 BHK flats, area will come out to be 230.26. Total built up area is 9,210 square feet. And 4 BHK flat area built up, undivided share will come out to be 460.53 square feet, and it is 9211 square feet. And you can check it that again the total area, if you add all these three, total will again be 37,000, approximately 37,500. You can cross check that sum of all the UDS of all the 120 units, it should be equals to the total covered area. If you calculate, means if you calculate the share in each, so it should be equals to the total land area, which is 37,500 square feet. You can cross check it also. Clear? Any doubt? So now, once the undivided share of land is known to you, you have to calculate its value. So again, it is the value is calculated as we have been calculating the value of, in case of cost approach, land and building method. So what we do there? We calculate the comparable value. So it will depend. So here what happens is, when you are doing valuation in cost approach, here there are many things which you have to take into consideration, which you have to make adjustment for location, for FSI, corner or non-corner position, road width, and time of transaction, etc. That is what you have to do when you have to do comparable transactions. So let us suppose that the valuer who was doing valuation, he collected the data. जी प्रभात जय जी, what do you want to know? सर मैं ये बोल रहा था, जैसे हमारे सतना में एमपी में यूडीएस का उल्लेख नहीं रहता सर सेल डीड में, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए सर? सर पहले नहीं रहता था, अब रेरा होगा। रेरा में अगर नहीं कोई सर, फ्लैट, अभी भी लेटेस्ट रजिस्ट्रियों में भी नहीं हो रहा। सुपर बिल्टअप पे वो चार्ज करते हैं कंपोजिट रेट के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी में भी, और उसमें यूडीएस का उल्लेख नहीं रहता सर। सर फिर उस आपको वही इसीलिए प्रोसीजर आपको बता रहा है कि कैसे कैलकुलेट करना है यूडीएस। अगर सुपर बिल्ट अप एरिया में कर रहे हैं तो सुपर बिल्ट एरिया उस फ्लैट का आप कैलकुलेट कर लो। टोटल सुपर बिल्ट अप एरिया आपको पूरे प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए, और टोटल लैंड एरिया पता होना चाहिए। वहां से आप यूडीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप वैल्यूएशन करोगे किसी बैंकिंग के लिए फ्लैट की, तो वहां पे यू हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स। तो लैंड कंपोनेंट लेकर के मार्केट रेट लैंड का कंसीडर करके और बिल्टअप जी एरिया दोनों जी दोनों जी को जी मिला करके अपन को करना सर। जी 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 सर। लैंड कंपोनेंट कंसीडर करके जी जो जी मार्केट रेट है लैंड का उसको कंसीडर करना, और कंस्ट्रक्शन का रेट अलग से लेना। जी जी, वो अभी आ रहा है सर, कैसे करना है वो आ रहा है ठीक सर, सर, अभी आ थैंक रहा है, अभी आ रहा So one question. है। जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर, लाइक इन हिमाचल प्रदेश और शिमला सर, पहले क्या रहता था 2023 से पहले सर, एनजीटी ने सर 2.5 स्टोरीज देना शुरू कर दिया सर, नॉट मोर देन दैट।
तो उसमें सर लोगों ने जो नक्शे पास करवाए थे, जब मैप पास कराए थे, अभी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओवरटर्न कर दिया। तो अब जैसे सर किसी की टू स्टोरीड अप्रूव्ड है, अब आज की अगर हम सर वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारे पास अगर पुराना मैप आता है तो बाद में सर उनको 3 3 स्टोरीड भी मिल रही है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हम? पर अगर तो देखिए उसमें दो चीजें हैं। अगर तो एफएसआई बढ़ गई है, जी। अब बढ़ गई है, पहले नहीं थी, जी। पहले कम थी, पहले मान लो 2 थी तो अब 2.5 हो गई है, तो जी। उसको तो आप जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन उसको अब, क्योंकि प्रोजेक्ट जिस दिन बना उस पर्टिकुलर डे के जो बिल्डिंग बाई लॉज थे वो एप्लीकेबल हो गए उसके ऊपर। जी। ठीक है ना? तो ये ऐसा नहीं होगा कि अगर बिल्डिंग बाई लॉज 2004 से 4 में बिल्डिंग बनी है तो 2006 वाले लगेंगे, हम्म, 2004 वाले ही लगेंगे। हाँ, ओके। किसी जगह पे क्या था कि जो कुछ स्टेट्स ने क्या किया, जैसे आपके हिमाचल में आप कह सकते हो कि क्या हुआ कि उन्होंने एनजीटी के अपने बिल्डिंग, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो हर एक जगह पे लगना चाहिए, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया कि दैट इज नॉट मैंडेटरी। ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन बिल्डिंग बाईलॉज। अब जी। प्रॉब्लम क्या हो गई कि बिल्डिंग बाईलॉज हिमाचल ने बनाए, उन्होंने एनजीटी के जो ऑर्डर थे या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे वो उनको देखा नहीं, जी सर। उसको इग्नोर करके अपने बाईलॉज बना दिए। हम्म, अब 4 5 साल 7 साल के बाद कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा, तो उसके बाद वो जो बाईलॉज बने थे वो उन्होंने नल एंड वाइड कर दिए। तो वी कैनट गो अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ओके सर। एज ए वैल्यूअर you have to be conversant with the building bylaws of that period when the building was constructed. ओके। And of course, if certain strictures have been passed against that building bylaws by the higher court, by high court or supreme court, you have to take consider that also. ओके सर। You cannot ignore supreme court orders. Even the state government cannot ignore, and even if they are ignoring, but we have to take these things into consideration. ओके सर। Okay. थैंक यू। सर रेरा में सर ऐसा कुछ प्रोविजन आ गया था क्या सर कि जो टोटल लैंड एरिया जो सिर्फ मतलब जो कॉमन एरिया है कैन नॉट बी सोल्ड, ओनली द मतलब कंस्ट्रक्टेड एरिया का ही जो है लैंड सर बेचा जा सकता है? So that is what the carpet area is concerned. They have to, where in case of RERA you have to calculate each and everything in carpet in respect to carpet area. नहीं Not तो built लेकिन up area, not super built up area, nothing that. नहीं, लेकिन सर लैंड तो हम सर टोटली सर फिर हम लोग सर डिवाइड अभी मल्टीप्लाई किया सर तो हम लोग ने कंप्लीट लैंड को कर दिया कारपेट एरिया में भी। सर सर वही कारपेट एरिया जो है उसमें लैंड तो टोटली ही रहेगी ना सर। प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी तो टोटल लैंड में से ही निकलेगी ना। अब उसमें से ये तो है नहीं कि सुपर बिल्ट अप एरिया की लैंड आप माइनस करोगे। सर किसी ने देखिए, सर को बताया मैं कि इसको सर सिर्फ मैं इफ यू अलाउ मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करता हूँ कृष्ण कांत जी का क्वेश्चन। जी देखिए कृष्ण कांत जी, क्या है कि अगर आपके पास कोई फ्लैट है, लेट इट बी वो 20th स्टोरी पर है, तो आप उसमें जाएंगे कहाँ से? लिफ्ट से जाएंगे। एंट्री कहाँ से करेंगे? गेट से करेंगे। उसके बाद कॉरिडोर इस्तेमाल करेंगे, कॉरिडोर इस्तेमाल करके लिफ्ट इस्तेमाल करेंगे या स्टेयर इस्तेमाल करेंगे। और अगर लेट इट बी शाम को आपको घूमना फिरना है तो जो पार्क वगैरह है वो भी इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली तो टोटल जो लैंड है उस कैंपस की, उसकी जितनी भी फैसिलिटी, लेट इट बी स्विमिंग पूल है या कोई उसमें कोई मल्टीपर्पज हॉल है या कोई और फैसिलिटी है, वो भी आपका हक बनता है इस्तेमाल करना। पहले क्या होता था, उसका प्रोपोर्शनल एरिया, जैसा तरसेम सर ने एक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा था कि वो जो सुपर एरिया में ऐड कर देते थे, और जरूरी नहीं है कि वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है, लेकिन ऐड कर देना है, और जरूरी नहीं है वो प्रोपोर्शनेट ही हो।
कई बार क्या होता था, सुपर एरिया वो प्रोपोर्शनेट ऐड कर देता, लेकिन वो उतना सुपर एरिया होता ही नहीं था। ऐसा सुनने में आया, आई डोंट नो, मुझे ऐसा कोई रेलेवेंट ऐसा कोई एग्जांपल नहीं मिला। लेकिन उसमें उसकी पेमेंट भी आपको करनी पड़ती थी, और उतना आप सोचते थे मेरे पास 1500 स्क्वायर फुट है, लेकिन एक्चुअल में आपके कब्जे में सिर्फ 1000 स्क्वायर फुट होता था। तो अभी रेरा ने क्या किया है कि जितना आप कारपेट एरिया आपके पास है उतने की रजिस्ट्री होगी, बाकी की फैसिलिटीज जो है वो कॉमन एरिया अलग से होगा, उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी आपके नाम से। ठीक है ना, वो कॉमन एरिया होगा, कॉमन एरिया जो है वो आपके लिए है। इसीलिए अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड कैलकुलेट करते वक्त वो टोटल एरिया से ही निकालेंगे। वो आपके फायदे के लिए, फ्लैट में आप हवा में तो उड़कर आएंगे नहीं, हेलीकॉप्टर से नहीं आएंगे, सीधा फ्लैट की बालकनी पर लैंड करेंगे। आप नीचे का कॉरिडोर भी इस्तेमाल करेंगे, लिफ्ट भी करेंगे, स्टेयर्स भी करेंगे, गेट वॉचमैन जहां पर लगा हुआ वहां से एंट्री करेगी, आपकी गाड़ी भी पार्क होगी, सब कुछ होगा। आप पार्क भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीजें भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी फैसिलिटीज हैं वहां पर, जिम वगैरह है वो भी इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपर्पज हॉल, कई फैसिलिटीज होती है, स्कूल या वट एवर इट इज। तो वो बिल्डर इंडिपेंडेंटली सेल नहीं कर पाएगा, सिर्फ कारपेट एरिया सेल कर पाएगा, जैसा मुझे समझ लगता है। बाकी राजविंदर सर आपको क्लियर बता पाएंगे। यस सर, ओवर टू यू। ठीक है संदीप जी। तो लैंड का रेट जो है, सर एक चीज, ये जो आप लोग ये जो एक चीज सर, ये जो अनडिवाइडेड शेयर, इसका पर्पस क्या है अल्टीमेटली? वेदर दिस इज, यू कैनॉट सेल इट, दिस इज अनडिवाइडेड, I mean undivided, and it cannot be sold, then what is the purpose of writing this thing? Suppose I write 12,000 rupees per square feet and the total value is something like some lakhs or something that, but what is the purpose? Because you were only breaking the down that item what was there in the already had been registered with reference to that value, with reference to that money. But if you have to, I mean, buy back or something like that, you have to pay whatever is the rate finalized. In that rate, both things are there already. So you cannot separate it out. You cannot separately sell it out. You don't have got the power to have those items as a separate. So if this is not separate, then what is the purpose of having this market value of the UDS? सर मैं तो टेक दिस क्वेश्चन सर, मैं Yes. क्वेश्चन ले सकता हूं, फिर आप उसको जी, जी। एक्सप्लेन कर दीजिए जितना मुझे जी, समझ जी। लगता है। देखिए सर, गुप्ता सर, हाँ सर बोलिए। एक बिल्डिंग बनी है लेट इट बी 20 स्टोरी, उसमें एक फ्लैट आपका और मेरा है अलग अलग। ठीक है, वो बिल्डिंग आज की डेट में नई है, हमने खरीद लिया है, हमारा प्रॉपर्टी आ गया। इन सिंपल वर्ड्स में ट्राई कर रहा हूं समझाने की कोशिश, टेक्निकली इसका राजविंदर सर आपको पूरी तरह बताएंगे। तो वो हमने बिल्डिंग खरीद लिया, वो पर्टिकुलर पोर्शन खरीद लिया या फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट खरीदने के बाद हम उसमें रह रहे हैं, ड्यू टू एनी नेचुरल डिजास्टर, अभी फ्लड आता है या कोई भूकंप आता है या फिर कोई एनी अदर डिजास्टर आता है, या समझ लीजिए कहीं से कोई बम आके गिर जाता है और वो बिल्डिंग खत्म हो जाती है, या फिर नेचुरल तरीके से हम सोचें कि डेप्रिशिएट हो जाती है बिल्डिंग और उसकी साल्वेज वैल्यू रह जाती है 50 साल के बाद या 60 साल के बाद। ठीक है ना, बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट होगी ही होगी, एक ना एक दिन अल्टीमेटली उसकी लाइफ है और खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगी या गिरने लगेगी या गिराने के लिए उसका ऑर्डर आ जाएंगे, कारपोरेशन बोलेगी भाई ये बिल्डिंग अनसेफ है, इसको गिरा दो। आप बेशक रह रहे हैं, आपको लग रहा है सेफ है, ऐसा कई बिल्डिंग्स में देखा है, म्युनिसिपल कारपोरेशन के ऑर्डर आ गए, आसपास के लोगों ने बोला ये बिल्डिंग गिर जाएगी और हमें भी नुकसान होगा, तो आप इसको डिमोलिश करिए। अगर वो बिल्डिंग डिमोलिश होती है, वेदर वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से होती है, अर्थक्वेक की वजह से होती है, किसी फ्लडिंग की वजह से उसकी फाउंडेशन सैग कर गई और ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया है, या बिल्डिंग रहने के काबिल नहीं होती, या इकोनॉमिक लाइफ उसकी खत्म हो चुकी है और कारपोरेशन ने उसको जो लीगली स्टैचू की वजह से उसको डिमोलिश करना पड़ रहा है, देन आपके पास और मेरे पास क्या बचेगा? क्या बचेगा सर? लैंड बचेगा। लैंड बचेगा, लैंड। यूडीएस। हाँ, यूटीएस क्यों बचेगा? बिकॉज इट इज नॉट अ डिवाइडेड शेयर। अब उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर ये जो एंट्री वाला गेट है ना ये संदीप बंसल लेगा और बामन देव सर जो लेंगे वो पार्क वाला लेंगे, और जो बिल्डिंग का मलबा है वो पड़ा रहने तो वो अपना तरसीम सर ले लेंगे।
ऐसा नहीं है, इट इज अ अनडिवाइडेड शेयर। मींस कभी भी वो बिल्डिंग या उस बिल्डिंग जो पार्सल ऑफ लैंड है, कभी भी वो सेल होगा तो वो पूरा का पूरा पार्सल होगा। इट इज अ अनडिवाइडेड शेयर। योर शेयर इज देयर बट इट इज नॉट डिवाइडेड, इट इज नॉट डिमार्केटेड। तो आपको पता होना चाहिए मेरा इतना शेयर है। वो क्या होगा, कल को कोई बिल्डर खरीदता है, समझ लीजिए लेट इट बी सौरभ रघुवंशी जी, एक बहुत बड़े बिल्डर है, वो बोलते हैं भाई मैं आपका सबका फ्लैट बना दूंगा, मैं यहाँ पर 10 फ्लैट और बनाऊंगा, अभी मुझे एफएआर मिल रहा है। तो 10 फ्लैट बनाने के बाद वो 10 फ्लैट मैं अपने पास रखूंगा, बिल्डिंग आप ये लैंड आप मुझे सभी मिलके आप मेरा साइन कर दो, और सबको जितना जितना फ्लैट का एरिया था, यूडीएस था, मैं उसको सबको दे दूंगा, उनका उतना फ्लैट बनाकर दे दूंगा। तो उस वक्त ये काम आता है कि आपका उस पर्टिकुलर लैंड में कितना शेयर है, दैट इज अनडिवाइडेड, दैट कैन यू कैनॉट सेल इट इंडिपेंडेंटली। आप ऐसा नहीं कि भाई यार 10 फुट बाय 50 फुट का है, तो ये जो एंट्री के साथ में जो बनता है वो मेरा है, वो मैं उसके ऊपर अपना जो मर्जी कर लूं, ऐसा नहीं होगा। ये सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन उसमें आपका हिस्सा कितना निकलता है, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज इन द सेल डीड एज पर रेरा। आई थिंक आई वॉज एबल टू क्लियर इन सिंपल वर्ड। राजविंदर सर उसको प्रॉपर क्लियर बता पाएंगे, हम में से कोई एक्सपर्ट हैं जो रेरा के एक्सपर्ट हैं, वो उसको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। तरसेम सर शायद कुछ गाइड करना चाहते हैं। Sir, may I First come class, in? you have explained it very nicely, but my question is different. सर तरसेम सर what- का आंसर सुन लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन दोबारा से हम, हो सकता है आपका आंसर तरसेम सर देना चाहते हो। यस सर, तरसेम सर। Sir, this concept of valuing a undivided share, undivided value is very good for the project valuation. We are using this concept in the project valuation and a number of project valuation. So far as the individual flat is concerned, there are so many practical problems. First of all, I had never interacted with any RERA registration or RERA details where the UDS share is given. And moreover, when the developer develops any project, it enters into a sale of agreement with the initial purchaser, first purchaser. And sale of purchase agreement may he clearly takes all the rights with him. And after that, the subsequent sale are done, 2-3 sales are done. But the value at present gets the previous sale deed and the agreement to sell by the purchaser. And this is the concept. And only carpet area and the super area you mentioned. How it matters, because we have to do valuation as per market rate. Market rate may be based on the carpet, market rate may be based on the super area. And of course, we do the discounting और the orientation उसकी कौन से फ्लोर पे और सारी चीजों की डिस्काउंटिंग करने के बाद then we arrive at a particular per square foot rate, market rate, which we want to apply to a that particular flat. How the UDS will be calculated, and because after 4-5 years, nobody is giving the document, original document developer, how the area is there. Since he has kept a right for the further development and taking the benefit of the further FSI available, and he developing it, so how it's a very, very difficult exercise for a, such a small valuation portion. Had we, it's required for the project valuation, then we are required to consider it JDS share. For small flat valuation, I don't think it will serve any purpose, because we have to take a market value based on the carpet area or the super area. My question nobody has answered. Sir, just My hold on, just hold on, Gargi. last Just minute, hold last on. question. Just No, hold, just right, hold right. on. You will give Just me the hold answer. I know. Okay, okay. Sir, what happens is that first thing is, as Sandeep ji have told, that why this UDS is important to be mentioned, what you have asked. So it becomes especially critical when a building approaches redevelopment. When it is most critical, when it is becomes very important, as Sandeep ji have told you. तो थोड़ा स्लोली आपको बता रहा हूँ वही चीज क्या हो रहा है कि लेट अस सपोज व्हेन द बिल्डिंग has lived its economic life. Now, what will happen? So, there may be either voluntary demolition or there may be reconstruction. जी गुप्ता जी.
So what happens is, or through Maharashtra specific cluster redevelopment mechanism, there is also certain methods there in Maharashtra. Under Tamil Nadu urban land ceiling act exemption schemes, in development scenario, what will happen? Developer acquiring the rights to demolish or reconstruct. Developer acquiring the rights to demolish or reconstructed. So how he can do? He will have to offer each existing flat owner what he have to offer. He may be offering them a replacement flat in the new building, plus a revised UDS in the new building's larger footprint. There may be that FSI is changed. Because of that, the UDS will be changing. And during the reconstruction period, he may be offering temporary rental allowance. So whenever the redevelopment is to be done, there this UDS will be helping the owners. And second thing is, when you are doing valuation for a bank, valuation of a flat, there you have to justify. See here in this case, see here where calculating the value of see here, construction cost is 3,200 per square feet. So if you calculate the built up area, let us suppose the built up area of this flat is 1,050 square feet. So you calculate its value 1,450 square feet. Built up area is 3,200 per square feet. It gross replacement value comes out to be 46 lakh 40,000. Age of the building is, let us suppose the age is 5 years. You calculate its depreciation per year. It is 1.667% per year. Total depreciation is 8.33%. Depreciation amount is 3,86,512, and depreciated replacement cost of the building comes out to be 42,53,000. Now, bank requires you to justify that you have to calculate, you have calculated the total value. Total value will be, if you add both of them, total value, land value is building value is 42 lakh 53,000, and land value comes out to be 38 lakh 79,600. And you calculate both of them, add both of them, the value comes out to be 81.33 lakh. Now, if you, then how will you justify that that value is 81.33 lakh if you are doing valuation for the bank? How will you justify that? You have to mention building value as well as the land value. And you have justifying, like if you are doing valuation, you just cannot simply say that buildings are being sold at 82 lakh. You have to justify how this 82 lakh comes out to be.
Maybe marketability is there. In the market, the rates may be higher, but you have to justify. How will you justify that? They require this value of the undivided share of the land also. In the banking, you might be doing valuation for PNB or other banks. There you have to mention and you have to give a certificate that these things are within reasonable rates as far as market conditions are concerned. अभी अगर आप नए परफॉर्मा देखेंगे तो उसमें यूडीएस इंक्लूड किया गया है और धीरे धीरे सभी बैंक सभी में किया गया है सर। सभी अगर में आप वैल्यूएशन परफॉर्मा देखोगे जी। और दूसरा, जैसा अभी तरसेम सर ने बताया, वो बोल रहे हैं कि कहीं उन्होंने यूडीएस के रिलेटेड कोई नहीं देखा। देखिए, मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ, जलंधर। यहाँ पर कुछ फ्लैट कल्चर अभी डेवलप होना शुरू हुआ है, और एक मैं किसी अपने रिलेटिव के साथ में एज अ विटनेस साइन करने के लिए गया था, और उन्होंने, बिल्डर ने ये नहीं लिखा था, और मैंने भी क्योंकि मैं सिर्फ विटनेस के लिए, उन्होंने बुलाया था 5 मिनट आ जाओ फोटो खींचने के लिए, तो वहां पर सब रजिस्ट्रार ने उनकी रजिस्ट्री रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर यूडीएस नहीं लिखा हुआ, दोबारा जाइए, इसको दोबारा टाइप करा कर लाइए, और यूडीएस लिखे बिना मैं रजिस्ट्री नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा शहर है। अगर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है तो मेरे हिसाब से बड़े शहर में तो हर हर किसी शहर में हो रहा होगा। तो ऐसा कहना, अगर हो सकता है आपके पास कोई नई डीड नहीं आई हो या आपको कोई नई सिचुएशन एनकाउंटर नहीं हुई हो, अदरवाइज जहां तक हमारा सोचना है, ये हर सब रजिस्ट्रार के पास इंप्लीमेंट हो रहा है, और बिना यूडीएस के कोई अपार्टमेंट की रजिस्ट्री नहीं हो रही, एज पर रेरा कंप्लायंसेस। यस सर, ओवर टू यू। सर कई बार ना ये यूडीएस कोई अलग टर्म से भी रजिस्ट्री होती है, कई बार जैसे इंदौर तरफ प्रकोष्ठ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, हाँ, तो उसका उसका नाम वो अलग अलग हो टर्म सकता हो। है। यू आर राइट, यू आर राइट, थोड़ा एग्जैक्टली। नाम अलग हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द लोकल, उसका क्या, उसका पर्टिकुलर नाम है, लेकिन उसके बिना ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, अगर जैसा फ्लैट एक की रजिस्ट्री क्वेश्चन अभी आया था कि एक छोटे से फ्लैट में हमें क्या करेंगे, देखिए, एक छोटा सा फ्लैट हो या कुछ हो, वैल्यूएशन तो आपने देनी है, बेशक वो छोटा हो या एक बड़ा हो या पूरा अपार्टमेंट हो या एक पर्टिकुलर यूनिट हो। कल को अगर वो प्रॉब्लम आ गई है, 81.33 लाख जैसा सर ने बोला, जस्टिफाई करना पड़ा, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि ये कैसे आया। और उस वक्त अगर आप ढूंढने जाएंगे और वो प्रोजेक्ट में आपको डाटा नहीं मिला, जब आपसे उसने वैल्यूएशन करानी है, तो वो डाटा प्रोवाइड करेगा, चाहे वो बिल्डर से लेकर दे, चाहे कहीं से भी लेकर दे। लेकिन जब आप 2 या 4 5 साल के बाद जब ये लिटिगेशन में केस जाएगा, आप दोबारा जाओगे, वो आपको फ्लैट के अंदर भी नहीं घुसने देगा, और आपको डाटा तो दूर की बात है, आपको को प्रोवाइड कर दे। तो इसलिए बेटर है कि आज ही आप तैयार रखिए, करके रखिए कि कल को अगर मुझसे कोई डाटा मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। अगर मुझसे जस्टिफिकेशन मांगी जाएगी 81.33 लाख कैसे आया, इसको डिवाइड करके, वो तो मुझे भी पता है कि वहां पर 50 लाख का फ्लैट बिकता है, मैं 50 लाख वैल्यू दे दूंगा, लेकिन 50 लाख कैसे आया, और कल की डेट में उसको 50 लाख जस्टिफाई करना पड़ा, कैसे करेंगे आप? इज इट पॉसिबल? अगर आप एक नोट, करेंसी नोट भी देखते हैं, नीचे साइन होते हैं गवर्नर के कि मैं इसकी गारंटी लेता हूं, तो कौन लेगा 81.33 लाख की गारंटी? आपको देनी पड़ेगी, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए इसको लाइटली नहीं ले सकते। अगर आप लाइटली ले रहे हैं, देन यू कैन बी इन ट्रबल एनी टाइम, एनी वेयर, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओवर टू यू सर, थैंक यू एंड सॉरी टू डिस्टर्ब। ओके सर। तो बाकी जो आपके डाउट्स है अभी आ जाएंगे, अभी हम लोग उसका वही डिस्कस करेंगे सारी चीजें। सो वी हैव कैलकुलेटेड सर एक लैंड चीज वैल्यू। पूछना था मुझे। सर नोट करके रखिए, ये सेशन पूरा होने दीजिए, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी काफी कुछ है आने वाला, तो जो आने वाला हो सकता है आपका डाउट उससे रिलेटेड हो। आप नोट करके रखिए, पेन और पेपर पे नोट करिए। जैसे सेशन खत्म होगा, एक एक डाउट आपका हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यस सर, ओवर टू यू। तो we have having a 318 square feet of undivided share of land. We calculate, we find from the market that the land rates varies from 11,000 to 13,000 per square feet. And after applying for time, location, size, etc., value has derived that the market rate is 12,200 per square feet. So guideline value is 8,500. The UDS value 8,500 to 318 comes out to is 27 lakh 3,000. Market value from the comparable, it is 12,200, 30 lakh 8 lakh 79,600. And if we take the average of a guideline and market value, it is approximately 32 lakh 91,000.
This is just for our reference. So if you are doing valuation for bank mortgage purposes, so what we do, we will be taking market value of the land as 38,79,000. If you are doing valuation for guideline purposes, then the value will be 27,03,000. Guideline value of UDS. Okay, so that is 38,79,600, approximately 38.8 lakh is the value of the land. Then for the superstructure part, we will be calculating depreciated replacement cost of the building, and you know how to calculate it. You multiply it with the replacement cost, then you apply the depreciation, you calculate the depreciated replacement cost of the building, which comes out to be 42,53,488. We have already discussed it. We need not to go in the detail again. So the total value, see here, we are applying a straight line method here, which is generally used by the government valuers, which are generally used under section 34 AB. But in now this method is 34 AB, you know it has been repealed, but still the methodology received. And you may also be using declining balance method, or you may be using constant percentage method, which is also called declining balance method if it is in case of older structures. Or generally for RCC structures of 5 years old, we are using this straight line method. But sometimes as a valuer, you see there are two things. One is effective age and actual age. Maybe that if the flat is well maintained, if it is 20 years old, if it is well maintained, you can apply straight line method. But if the maintenance is not good, so effective age, actual age is 25 years, effective age may be 30 years, 35 years, or 40 years, or it may be less than that. So you may incorporate that thing in depreciation part also, depending upon the condition of the flat. Here we assume that the condition of the flat is proper and it is 5 year old. We are applying this straight line method of depreciation. So next is total apartment value. We calculate UDS value of the land and then depreciated value of the building 46.40. So total value comes out to be 81.33. So this is where you have to justify that the value. So even in case of a joint venture ratio, how you were calculating that joint venture ratio? You were doing valuation, you are doing case studies on joint venture ratio. What you were doing there? You were taking land component, you were taking building component, you were adding all of them, both of them. That is what we are doing here. There it was for the project, here it is for a particular flat. So it comes out to be 81.33 lakh, and approximately the value, if you divide it with the 1,450 square feet, which is the built up area, per square feet rate comes out to be 5,609. So now we will check it with the market value. We will be taking an data at what price this. So this is what this Gupta you were asking. So see here, you may apply market value also. So if you take the market comparison, we get that collected the data of the similar buildings in the vicinity of the building, what we do in the market approach. So here we are doing valuation of Prestige Elara 3 BHK 1,450 built up area, 7th floor, 5-year-old building. So we collected the data of similar flats in the vicinity of that flat. So what we got,
from the data. Comparable one, it is 1420 square feet, approximately 1450. It is on the 8th floor. It was sold in March 2024 was for rupees 6,500. So this is the the data a valuer is expected to be calculated at the time of visit. एक वैल्यूअर को मिनिमम ये डाटा सेल कंपैरिजन आपको ही इकट्ठा करना है, ये किसी प्रॉब्लम या एग्जांपल में नहीं दिया होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है मार्केट अप्रोच से। अगर आपको लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेदर आप प्रोपोर्शनेट करें जैसा गुप्ता जी ने और या फिर तरसेम सर ने बताया, या आप यूडीएस से करें, मार्केट अप्रोच तो आपको इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। और सेल कंपैरिजन आपको देने हैं, और सेल कंपैरिजन का जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। दैट कैन बी आस्क्ड एनी टाइम from a valuer at the time of litigation or at the time of inspection. Over to you, sir. so this is the data we have collected. From this data, we comes to a particular value. You know what we do in the market approach? We apply weightages, different weightages, and then we apply it, arrive at a particular value. So after applying adjustment for floor level plus 1% per floor above or below the subject, 0.5% for per month lag, then for the location quality, and for different things, we comes out that from these data, we assume that the value is 5,980 per square feet. And from the market comparison, the value comes out to be 86,71,000, approximately 86.71 lakh. This is where जी गुप्ता जी, अब आपको क्लियर है कि हमने क्यों यूडीएस लिया? आर यू देयर गुप्ता जी? It is not that you have to use market approach, sir. नो मार्केट अप्रोच तो वो तो कंपैरिजन वगैरह तो हम लोगों को करना ही होता सर था। मार्केट अप्रोच अभी देखिए ना सर, हमने मार्केट अप्रोच से भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट अप्रोच से भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हाँ, हाँ, अब हम नहीं, जस्टिफाई करेंगे कि कौन सी वैल्यू लेनी है सर। देखिए, सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू टू कैलकुलेट। नहीं सर, ये ऐसा नहीं है कि डिपेंड करेगा। अब आपको बताना पड़ेगा आईबीबीआई में कि आपने मार्केट अप्रोच ही क्यों ली, कॉस्ट अप्रोच ही क्यों ली। ये ऐसे डिपेंड नहीं होता सर। वो तो सर हमारा डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं सर, नहीं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, थोड़ा सा समझिए, सुनिए और देखिए। आप पिछले थोड़े दिन पुराने जाइए, एक नया फॉर्मेट आ गया है, उसमें आपको तीनों वैल्यू से वैल्यूएशन देनी है, और कौन सा वैल्यूएशन कौन सा अप्रोच से आपने किया है वो जस्टिफिकेशन देना है, और दूसरे से क्यों नहीं किया ये भी देना है। परफॉर्मा पढ़िए सर, परफॉर्मा पढ़िए, उसमें आपको सब कुछ क्लियर होगा। जो नया परफॉर्मा आया है आईबीबीआई का, नाउ इट इज अ डॉक्यूमेंट्री नेसेसिटी। अब आपको उसी परफॉर्मे के ऊपर रिपोर्ट देना है। अब ये हमारा मर्जी नहीं है सर, इट इज नॉट एज पर अवर विल कि हम क्या कर रहे हैं। नो, नाउ इट इज अ रेगुलेटेड नेसेसिटी। आपको जरूरी है, आपको मेथोडोलॉजी आपको करने के लिए एक अलग से सर्कुलर आया हुआ है। नाउ यू हैव टू डिस्क्लोज इन द सीओसी। नहीं सर, हम अभी देखते हैं सर। अभी गुप्ता जी अभी आगे आइए, रुकिए थोड़ी देर। सर एक और सजेशन भी है, टू हैव ए रीजनेबल टेस्ट वी कैन अप्लाई द रेंट कैपिटलाइजेशन मेथड आल्सो, so that we so सर कल को in the case of flat कल करेंगे वो चीज। कल का अप्रोच का कंपैरिजन ले रहे हैं, कल को हम इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच का कंपैरिजन लेंगे, वो क्लियर हो जाएगी आपको बात। आप ठीक कह रहे हैं, आप ले सकते हो सर इनकम अप्रोच भी। मैं तो जस्ट नॉट लेना, मैं तो आई एम सेइंग फॉर द रीजनेबल चेक जी, यू हैव टू राइट डायरेक्शन और समथिंग अनरीजनेबल इज गोइंग ऑन। सी है सर, सी सर। अब देखिए गुप्ता जी कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ यूज हो रहा है, अभी देखिए सर।
अब आपने you have calculated cost approach, the value comes out to be 81.33 lakh. If from the market comparison, it comes out to be 86.71 lakh. And if you take the simple average, it comes out to be 84.02 lakh. And if you take a weighted average, we are taking 30% for the market and 70% for the cost approach. So value will comes out to be 85 lakh. We're taking a weighted average. So here we are rounded out up to the value 85 lakh. सर अब क्लियर है गुप्ता जी क्यों हमने लिया यूडीएस? ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी, ये तो एग्जांपल है, ये एक्चुअल नहीं है सर। सर ये 30-70% क्यों लिया है? अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है सर, ले क्यों लिया वो भी आ रहा है। अभी अभी खत्म नहीं हुआ सर, कहानी चल रही है अभी। सर एक चीज पूछना था, लीगली स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेशन में क्या होना चाहिए सर? वो यूडीएस को नहीं कंसीडर करते। यहाँ रजिस्ट्रार से मेरी बात हुई थी सतना में, बोले आप भले यूडीएस डाल दीजिए, मैं यूडीएस को नहीं काउंट करूंगी, पूरी वैल्यू कंपोजिट रेट निकाल रखा उन्होंने। तो सर सारे मान लो वही 15 वही फ्लैट बने हैं, तो सभी में पूरा लैंड कंपोजिशन इक्वली पूरा डिवाइड कर, जोड़ते वही हैं वही और दिक्कत बिल्ट है अप एरिया वो। के आधार पे गाइडलाइन जोड़ करके स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं। वही कह रहा है सर, उन्होंने अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप वैल्यूएशन करोगे तो उसी हिसाब से ही चलना पड़ेगा जो आपको सेल डीड मिला। वो अपनी हम्म। तरफ से अगर करोगे तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि रेरा के अकॉर्डिंगली इस तरीके से होनी चाहिए। अच्छा। ठीक है ना? ठीक। तो अब डिपेंड करेगा कि आपने दोनों तरीकों से कर दो। अब जिसने यूज करनी है वो डिपेंड करेगा कि कौन सी लेते हैं, उसके उस पे है। क्योंकि उन्होंने गाइडलाइन रेट देखिए में अगर तो कंपोजिट आप रेट निकाल रखा है। अगर बैंकिंग के लिए कर रहे हो तो दोनों तरीकों से करो। जी। ठीक है, अगर किसी ने पर्टिकुलर अपनी बिल्डिंग की परचेज के लिए लेनी है या सेल के लिए वैल्यूएशन लेनी है, तो फिर तो वो आपको जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना पड़ेगा, गाइडलाइन वाला। जी जी। देखिए, here we are discussing about the standard procedure SOP. ओके, आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं, देयर में भी सो मैनी ऑप्शंस कि आप कैसे जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, साइड से जाएंगे, गांव वाले रास्ते से जाएंगे, टोल टैक्स बचाने के लिए जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप जीटी रोड से जाएंगे। ठीक है, हम लोग ऑफिशियली सिर्फ जीटी रोड से ही जाना पसंद करेंगे और ऑफिशियली प्रोसीजर एसओपी वो ही होगा। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसे जाना चाहते हैं। देयर इज नो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम होगी, या गाड़ी का शॉकर टूट जाएगा, या ऊंचे नीचे रास्तों पे, या फिर कोई ऐसी जगह पर निकल गए जहां पर आपको चार लोगों ने रोककर बंदूक दिखाकर लूट भी सकते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही होता है जो लीगली वैलिड होता है। अब रजिस्ट्री करते वक्त दैट इज जो आप सर्कल रेट की बात करें, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू एट दैट द रेवेन्यू कैन बी गिवन या और डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट। तो उसके लिए वो आपको एक सब रजिस्ट्रार के पास अगर 400 फ्लैट है, वहां पर वो अकेले अकेले की तो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा। उनका एक सर्कल रेट के अंदर एक लिखा होता है कि पर स्क्वायर फुट इतना है और इसका लैंड रेट इतना है, 1200 रुपए पर स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट हमने उसका लैंड रेट निकालना है, और कंस्ट्रक्शन का रेट अगर इतना है तो इतना निकालना है। उसके लिए भी उन्होंने सिटीज में अलग अलग किया हुआ, अप टू ग्राउंड फ्लोर के लिए इतना है, फर्स्ट टू 54th फ्लोर के लिए इतना है, फोर्थ फ्लोर से 15th फ्लोर के लिए इतना है। वो अलग अलग उन्होंने लैंड रेट में डिवाइड किया हुआ है अलग अलग। तो अगर आपका 5th फ्लोर पर फ्लैट है तो 5th फ्लोर पे जो लैंड का रेट है वो आपको लेना पड़ेगा, और उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आता है, किसी भी फ्लोर पर बनाए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 से 10% हाइट के हिसाब से हो जाता है। तो ये डिफरेंस सिर्फ सर्कल रेट के लिए है, डीड के लिए। लेकिन एज अ वैल्यू अगर आपको सर्कल रेट के लिए देना है तो फिर तो अर्जी नवीस हमसे ज्यादा जानता है ना। हमारी और आपकी जरूरत क्या है? हमारी और आपकी जरूरत है कि हम एसओपी के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको स्कूटर से जाना है तो स्कूटर पे बिना हेलमेट के भी जा सकते हैं, प्रॉब्लम तब आएगी जब आपका चालान हो जाएगा। ठीक है संदीप जी। अब यस सर, ओवर टू सुरेंद्र यू कुमार जी सर। आपने पूछा था कि हमने 30-70 क्यों लिया, जी वही सर। चीज आ रही है। ठीक है, द मार्केट अप्रोच इज वेटेड हायर 70%. Why? Because sufficient recent comparables exist in the within the same micro market.
And secondly, the subject is a residential property in a liquid market. And mortgage valuations for residential apartments are principally market value driven under RBI approved valuation norms. And the cost approach is weighted lower 30% as it serves primarily as a reasonableness check. It is particularly useful to confirm that market value is not below the replacement cost, which would suggest a market distortion or external obsolescence. So see here, the market value exceeds the cost value. Market approach से जो value है that is 86.171 and from cost approach it is 81.33 lakhs. It approximated having a market value is having 6.6% above cost, which is consistent with the developer's premium, location, desirability, etc. So you have to justify this. तो ऐसा नहीं है क्यों यूडीएस की वैल्यूएशन करनी है, अब आपको क्लियर हो गया होगा. So you have to justify your valuation, sir. That is the thing. Then अगर आप देखोगे कि यूडीएस की अगर वैल्यू लोगे, अगर आप स्टैंप ड्यूटी के ऊपर बात जैसे आप पूछ रहे हो, तो कुछ स्टेट्स में स्टैट्यूट्स है कि यूडीएस के लिए उनका रेट यूडीएस का तमिलनाडु में जैसे सॉरी जहाँ पे हम वैल्यूएशन कर रहे थे वहां जो रेट था 8,500 था, तो 27,03,000 आ गई. और जो शेड्यूल्ड रेट है कंस्ट्रक्शन का that is 2,000 per square feet for RCC into 1,450 square feet, so 29 lakhs. So stamp duty value is 56.03 lakh. It is much below the market value. So now what will happen, what this difference will make with the in case of income tax, we will be taking that. So this is market value as derived from cost per market approach. It is 85 lakh. Market value per square feet is 5,682 square feet. Now what will happen? So see here, just hold on. सर आवाज नहीं आ रही. एक्सक्यूज मी सर. आई थिंक सर कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है. मैं ट्राई करता हूँ राजविंदर सर को दोबारा. आ गए. ओके ओके ओके. Am I audible, sir? यस सर नाउ ऑडिबल. कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से था. जी सर. So another problem is with the under section 56 of Income Tax Act. What it says that market value is 85 lakh. It significantly exceeds the stamp duty value 56 lakh. So it may attract a deemed gift addition of 20 lakh, 9 lakh under section 56(2) of Income Tax Act, unless the difference is within 10% of safe harbor. If the difference is more than, see here, it is 29 lakh. It is more than 10%. So it may attract tax exposure. Here, what it makes the difference. So in case of if the difference, what it says, if this difference is more than 10%, which from the guideline value
it should not be more than 5.6 lakh. Here it is 29 lakh. So see here it may attract the tax exposure. Then in certain cases you may have to do the give the forced sale value, which may be from varying from 10% to 30%. So here we are from market conditions, we find out that in the OMR corridor, it is 50% is 15% is appropriate. We calculate the forced sale value. So forced sale value means if the sale that must occur within a short time frame, means within 90 to 180 days, without full market exposure, as would occur under SARFAESI. So we are applying 15% discount forced sale value, 85 lakh into 15%, 12 lakh 75,000. So forced sale value comes out to be 72 lakh 25,000. So see if we calculate this value 85 lakh, so see here from this total cost, UDS land component is approximately 47.7% and building cost is 52.3% out of 85 lakh. So this is again consistent with the market conditions. So that is what we have already discussed, this UDS in context of redevelopment. If redevelopment is to be done, then how this UDS will be helping. So then see here in that someone has asked about if FSI is, if there is unused FSI. So see here FSI permitted is 4.0 and FSI used is 3.84. So in case if you have to find a development potential value, it means for flat number B704, the proportionate unused FSI development potential 0.8480% multiplied by 37,500 into 0.16. Proportionately, you can calculate it as you have been doing in insurance pro rata basis. Similarly here, 0.16%. So it is again 58.88 square feet of additional build-up area. And if you find its value, you can calculate its value. And if you are doing evaluation, court order valuation, in case of partition disputes, succession matters, or SARFAESI DRT proceeding, courts frequently commission independent UDS valuations. There, in case of if you are doing valuation, there you may have to give independent UDS valuation also, though it is not mentioned in the sale deed or in other parts. There the court may ask you to do independent UDS valuation. देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, आपको यूडीएस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. व्हाट इज मीन बाय यूडीएस? यस सर, ओवर टू यू. So the valuer is asked to value the specific undivided share, not the entire apartment. And the output is an abstract fractional land value expressible as percentage of total value of the land of the flat. And again, in case of corporate balance sheet, अभी
आप देखोगे अभी, अब ये सारी चीजें जब पढ़ोगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्यों यूडीएस जरूरी है, क्यों हम नकार रहे हैं। सो इन केस ऑफ कारपोरेट बैलेंस शीट, स्पेशली रियल एस्टेट एंटिटीज जो है, real estate companies or corporates holding residential, commercial, and inventory, if you are doing valuation under accounting standard 40 for investment property, it requires land component of the investment property to be held at cost separately and not depreciated. So there you have to mention the land value, sir. So it is not only in the banking. As a valuer, you may have to do the valuation under a accounting standard अगर 40 आपने also. किसी भी आरईआईटी की वैल्यूएशन की है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की, तो उसमें आपसे अगर अपार्टमेंट के उनमें इन्वॉल्व है वो प्रॉपर्टी, तो आपसे वो यूडीएस ही पूछेंगे। यूडीएस एक सेपरेटली आपको कैलकुलेट करके देना है। दैट इज द रिक्वायरमेंट। यस सर, ओवर टू यू। So UDS computation is essential for the segregation in the opening balance sheet on the first adoption of Indian accounting standard. So nowadays, all the investment industries, they have to follow this Indian accounting standard 40. अब पता चल गया गुप्ता जी क्यों जरूरी पड़ेगा यूडीएस। अभी और आ रहा है सर। एक्चुअल में यूडीएस ही है जिसकी वैल्यू बढ़ती है, बाकी आरसीसी और ये सब चीज तो डिप्रिशिएट होती है। वही वही है सर, वही अभी अभी बहुत कुछ है इसमें, अभी और आ रहा है अभी। अब देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस अगर आप करते हो तो अब 2 BHK फ्लैट है, उसमें यूडीएस जो है वो 0.61% है। इसी इसी पूरी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिल्डिंग। एरिया इज 1050, यूडीएस इज 236.26, it is 0.61%, value is 61.24 lakh. 3 BHK we have calculated 85 lakh, and 4 BHK if we calculate on the same criteria, value is 1 crore 22 lakh 90,000. So now see here, so see here, लैंड वैल्यू ये भी वेरी कर रही है, सो इट हैज इम्पैक्ट ऑन द टोटल वैल्यू। So maybe when you are doing valuation, you may be having to do the valuation of multiple units. जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो फिर से ही सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, वहां पे ये टेबल आपको देना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट का। अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो एक एक फ्लैट की निकल गई, उसको नंबर ऑफ फ्लैट से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल गिव यू द टोटल वैल्यू। तो वहां पे भी यूडीएस की वैल्यू पर होता है। देखिए, तो आपको क्या लैंड एंड बिल्डिंग से उठ के सोचना पड़ेगा। लैंड की वैल्यू और बिल्डिंग की वैल्यू ही वैल्यूएशन नहीं है। सिर्फ लैंड की वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, प्रोपोर्शनल और उसकी वैल्यू का अपना कारपेट एरिया की वैल्यूएशन, कारपेट एरिया लिया, उसका लैंड कंपोनेंट कैलकुलेट कर दिया और बिल्डिंग का कंपोनेंट कैलकुलेट कर, दैट इज द वैल्यू। नो, दैट इज नॉट अ वैल्यू। अभी उसे बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वेदर आपको लगता है ये बहुत बड़ा है, छोटे से काम के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एसओपी है वो आपको फॉलो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, और नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम इन फ्यूचर हो सकती है। दैट इज अवर हम्बल सबमिशन। ओवर टू यू सर। अब जो आपके डाउट्स हैं वो अभी अब क्लियर होंगे कि क्या क्या गलती हो सकती है। गलती सेल डीड में भी हो सकती है या एज ए वैल्यू भी कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, सम डेवलपर्स क्या करते हैं, यूडीएस कैलकुलेशन दे यूज सुपर बिल्ट अप एरिया इन द न्यूमिनेटर बट कारपोरेट एरिया इन द डिनोमिनेटर, और वाइस वर्सा, उससे फिगर यूडीएस की गलत आएगी। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है मोस्टली। तो यू हैव टू चेक
अब दूसरी है, किसी ने यही पूछा था, अभी वही चीज यहाँ पे आ गई सर, कि फेज 1 बना है, फेज 2 अभी बना नहीं है, टोटल लैंड। अब यही चीज आपने देखनी है कि अगर ऐसी कंडीशन है कि जैसे इसमें था कि दो फेज, एक ब्लॉक 1 है, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, अभी ब्लॉक ए बन गया, ब्लॉक बी बना नहीं, या फेज 1 बन गया, फेज 2 बना नहीं, फ्यूचर डेवलपमेंट लैंड। तो डिनोमिनेटर में यही चीज आपने चेक करनी है। इन फेज डेवलपमेंट टोटल लैंड पार्सल में इंक्लूड फ्यूचर फेज नॉट येट डेवलप्ड। So इस केस में what you have to do in the developer, if the developer allocates UDS from the total land to the phase 1 unit only, each phase 1 unit will get larger UDS than intended. अब ऐसे आपको वहां पे साइड पे जाके चेक करना है कि ये ऐसा तो नहीं कर रहा कि टोटल लैंड वो पूरी ले रहा है, और अभी यूनिट 1 का जो है वो कारपेट एरिया टोटल लैंड, टोटल नहीं ले रहा, दोनों फेसिस का एक फेस ही बनना है, उसका वो बिल्ट अप एरिया ले रहा है, तो यूडीएस ज्यादा आएगा। ऐसा नहीं, आपको देखना है फॉर ओवर एलोकेटिंग लैंड राइट्स एंड पोटेंशियली लीविंग द इनसफिशिएंट लैंड फॉर फेज 2। फेज 1 वालों को ज्यादा यूडीएस मिल जाएगा, फेज 2 वालों को तो यूडीएस मिलेगा ही नहीं। So you must check that UDS land area in the sale deed correspond only to the subplot registered for phase 1, not to the entire development land. यहाँ कभी पे ये कभी चीज जो आपने आपको जो सेल डीड मिली है, जरूरी नहीं है कि उसमें जो यूडीएस लिखा हो बिल्कुल सही हो और प्रोपोर्शनेट हो। ऐसा भी हो सकता है जो यहाँ पर सिचुएशन नंबर 2 में बताया गया है, कुछ उसका एरिया फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बिल्डर ने रख लिया हो, तो उस केस में वो आपकी यूडीएस वहां पर डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन जब सेकंड फेज बनेगा तब उनके पास यूडीएस कम आ जाएगा, देन आपकी कैलकुलेशन टोटली रिवर्ट हो जाएगी। तो आपको ये टोटली दोनों चीजें आपको एट द टाइम ऑफ विजिट जब इंस्पेक्शन करेंगे तभी नोट करना चाहिए, सो दैट के आगे इन फ्यूचर कल को एनपीए होता है या किसी और लिटिगेशन में जाता है या कुछ होता है, तो आपके ऊपर एटलीस्ट कैलकुलेशन पार्ट में कोई ऑब्जेक्शन ना आए। यस सर, ओवर टू यू। ओके। उसके बाद सबसे पहले हमने देखो, सबसे पहले वी हैव व्हाट वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड यूडीएस सम। जब भी हमने कैलकुलेशन करनी शुरू की एग्जांपल में, तो ये चीज हमने चेक की कि सभी यूडीएस को ऐड करके देखा, वो इतना आ रहा है। आपने यही चेक करना है कि कहीं गलती तो नहीं है। मतलब आपको देखने को लगता है कि ये स्टेप तो हमें करने की जरूरत ही नहीं, अरे भाई इसकी भी जरूरत है, कि वाकई ऐसा ही है, जो डिटेल आपको दे रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। दिस इज योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द टोटल यूडीएस आल्सो दैट शुड मैच विद द टोटल एरिया। That there may be problem here that you have to check. As a valuer, it is your duty. So sometimes what happens that some developers are using super built up area in the numerator, but carpet area in the denominator. That you have to check. Then UDS sum exceeding the total land area, that you have to check. Then failure to account for common area ownership. As we have clubhouses, swimming pools, amenity blocks, sometimes have separate land portions carved out from the main plot. If these are not factored in the UDS calculation correctly, individual flat UDS may inadvertently include or exclude these parcels. So you have to check. The standard practice is to include all land, including amenity land, in the UDS denominator, so that each flat owner holds a proportionate share in the entire plot, including amenity area. ये चीज आपने चेक करनी है।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जब आप यूडीएस की वैल्यूएशन कर रहे हो तो कौन कौन सी वैल्यूएशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? दिस इज फॉर फ्रॉम द state from which we are taking an example. For Tamil Nadu, you have to take schedule A land, schedule B building. There are two schedules mentioned in the sale deeds of that particular state, stated there in mother deed title chain for at least 30 years. Patta, Chitta and Adangal are equivalent khata in case of Karnataka. Mutation records, incumbency certificate, etc. Then you have to check. Then you have to check RERA registration and disclosures from the RERA website. And for land valuation support, you have to take comparable registered sale deeds of a land restriction within 1 kilometer radius and within 12 months of valuation dates, guideline valuation certificate from SRO, written justification from for any departure for guideline value. For building valuation part, you have to apply standard rates of CPWD, daily schedule of rate, or Tamil Nadu PWD schedule of rates, or that schedule of rates of that particular state on which the in which you are doing valuation, and then you have to apply the depreciation, you know. Then for comparison, market comparison data, you have to take the market comparison within 1 kilometer within 12 months. And for that, you can use different online portals. So, final valuation certificate, you can mention that the following is a consolidated valuation summary of our flat number B704 as would appear in the face of registered value certificates. देखिए, जब भी आप मार्केट कंपैरिजन करते हैं तो एडजस्टमेंट ग्रिड मॉडल जरूर बनाइए. एज, लोकेशन, एमिनिटीज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ये सारी चीजें एक टेबल में जरूर लिखिए, तभी आप कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाइए. अदरवाइज कल को अगर आपको, देखिए, नॉर्मली 100 में से एक केस में लिटिगेशन होती है, तो मैं ये नहीं बोल रहा, आपको डराने का पर्पस नहीं है या कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर वो 100 में से एक केस आपका हुआ तब आप क्या करेंगे? कभी कभी किस्मत खराब होती है, माथा टेक के हम वैल्यूएशन करने नहीं निकलते और पीछे से भूत लग जाता है, स्टिग्मा लग जाता है. तो हो सकता है वो 100 में से एक केस आपका ही हो. तो अगर आपने ड्यू डिलिजेंस फॉलो की होगी, थोड़ा सा टाइम 15 मिनट फालतू लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, तो कम से कम आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं चैलेंज मुझे नहीं किया जा सकता. अदरवाइज काम तो सभी कर रहे हैं, दुनिया तो चल ही रही है, कितने सालों से, हजारों सालों से चल रही है, आगे भी हजारों सालों तक चलेगी. मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा, गलत करूंगा तो उससे दुनिया रुक नहीं जाएगी. लेकिन अगर मैं सही करूंगा तो कम से कम मेरे ऊपर या मेरे फ्यूचर के ऊपर या मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आएगा या मेरी कॉम्पिटेंसी पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा. दैट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स. यस सर, ओवर टू यू. So now this is all the details in a consolidated form. This is flat number 704, 7th floor, block B. Total extent of land 37,500 square feet, 0.86 acre. Built up area of the subject flat, UDS market value at 12,200 per square feet. UDS guideline value 27 lakh 3,000. Building depreciated value 42 lakh 58,000. From cost approach value is 81.33 lakh. From market approach value is 86.71 lakh. And fair market value which you adopted is 85 lakh. Forced sale value is 72 lakh 25,000. And stamp duty value is 56 lakh 3,000. This is for the bankers. You need not to give that. This is just for your reference only. Loan to value ratio. So the fourth, you can mention that fair market value of the property is 85 lakh and forced sale value is 52 lakhs 25,000.
बैंक वाले तो सर रियलाइजेबल वैल्यू मांगते हैं। उस वही अब सर रियल है। अब अभी आप आईबीबीआई के लिए कर रहे हैं तो पोस्ट सेल वैल्यू आपको देनी पड़ेगी ओके। ना। बैंक के लिए करोगे तो रियलाइजेबल है। So always when you are doing valuation, always identify which state apartment governs the property. First thing, then verify UDS stated in the registered sale deed and cross check against the RERA disclosures before beginning any valuation exercise. ये चीज आपको ख्याल में रखनी है। और दूसरी चीज आपको क्या रखनी है, यूज सेम एरिया डेफिनेशन, कारपेट एरिया, बिल्ट अप एरिया, सुपर बिल्ट अप एरिया, बोथ इन द न्यूमरेटर और इन द डिनोमिनेटर। देखिए, अगर आप सुपर एरिया से कैलकुलेट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सुपर एरिया ही होना चाहिए। अगर आप कारपेट एरिया से कैलकुलेट कर रहे हैं तो दोनों ही सेम होने चाहिए। कभी कभी जल्दबाजी में हमसे गलती ये होती है कि डीड में लिखा होता है सुपर एरिया और हम नीचे बिल्टअप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में, या उल्टा हो जाता है। वहां पर आपको टोटल कारपेट एरिया लिखा हुआ है एज पर, अगर रेरा कंपेटिबल डीड है तो, और नीचे आप सुपर एरिया के हिसाब से टोटल एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर गड़बड़ होती है। आप जानबूझकर या ओमिट करके गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इग्नोरेंस से गलती हो रही है। इंटेंशनली कोई गलती नहीं है, लेकिन यूनिट कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स। यस सर, ओवर टू यू। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, एक क्वेश्चन पूछना सो था। दूसरी चीज है, ऑलवेज रिकंसाइल यूडीएस सम टू द टोटल लैंड, जो हमने पहले डिस्कस किया। अगर आप आईबीबीए के लिए वैल्यूएशन कर रहे हो तो एफवीएम और एफएसवी दोनों आप दोगे विद रैशनल, क्यों? ठीक है। एंड ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर अंडर आईबीबीआई is personally liable for the accuracy of the valuation submitted to the courts, tribunal, banks, or insolvency professionals. So, error in USPS computation, particularly overvaluation that results in excess loan sections followed by NPA, have increasingly attracted regulatory scrutiny. Maintain complete working files signed comparable with you. So, this is all in today's. So if you have any doubt, we can discuss it here. डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जी सर। ये फोर्स सेल सेल वैल्यू में जो डिस्काउंट फैक्टर लिया था 15%, तो 15% क्यों लिया? सर वो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों लिया है, कि ये इसके एडवांटेजेस है, ये इसके डिसएडवांटेजेस। स्टैंडर्ड वो नहीं है। हाँ जी, स्टैंडर्ड दिस है। वहां पे कोई स्टैंडर्ड नहीं है। पोस्ट सेल वैल्यू का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इट इज जनरली वेरीज फ्रॉम 10 to 30%। ऐसे ही रियलाइजेबल को सर कोई 5% लेस ले लेता है, 10% लेस ले लेता सर रियलाइजेबल क्या है और पोस्ट सेल क्या है? रियलाइजेबल क्या है कि एक्चुअल में ऑनर के पास क्या बचा सभी खर्चे निकालने के बाद। है। जी जी। तो बेसिकली वो 5% से ज्यादा नहीं होता। लेकिन बैंक्स ने, जैसे पीएनबी है या दूसरे बैंक से, वो 15% लेते हैं। दे आर 10। टेकिंग 85% एंड रियलाइजेबल। हम्म। ओके। तो वहां पे बेसिकली जो रियलाइजेबल है, रियलाइजेबल क्या है वैल्यूशन, रियलाइज व्हाट इज रियलाइजेबल वैल्यूशन, व्हाट इज एक्चुअली लेफ्ट विद द ओनर आफ्टर उसने कुछ एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया कहीं, और उसने कुछ कमीशन दी या जो भी किया उसने, वो 5-7% से ज्यादा नहीं होता। लेकिन वो बैंक के नॉर्म्स है तो 15% ले रहे हैं। अगर आप किसी और पर्पज के लिए कर रहे हैं तो उसमें आप 5%, 10% अपने हिसाब से ले सकते हो। बट इफ यू आर डूइंग इट फॉर बैंकिंग पीएनबी, देन यू हैव टू चूज 15%। अब अगर फोर्स सेल की वैल्यू पे आए तो यहाँ पे क्या है कि एक तो बात ये है कि प्रॉपर्टी शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में सेल करनी है, विद इन 90 to 180 डेज इफ इट इज अंतरफास्टी। ठीक है। दूसरा,
जब कोई अकाउंट एनपीए हो गया तो आपको पता है कि वेल जो जब इसका ऑक्शन होगा तो वो मार्केट प्राइस पे इसको सेल नहीं होगा। अब कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसके अगेंस्ट जाते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो रोड के मेन रोड के नजदीक है या दूर है, वहां पे मार्केट कंडीशंस कैसी है, मार्केटेबिलिटी, मार्केट अप जा रही है, मार्केट बैलेंस्ड मार्केट है, जहाँ बायर्स मार्केट है या सेलर्स मार्केट है, वो सारी मार्केटेबिलिटी को आपने चेक करके उसके बाद आप फोर्स सेल वैल्यू पे आओगे। यहाँ पे जो 15% लिया गया दैट इज जस्ट आर्बिट्रेरी, वो कोई कैलकुलेशन नहीं, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करके नहीं लिया गया। जी अमर सिंह जी, actually you राजेंद्र have सर। to take consider all these things, all the different things into consideration for arriving at that particular percentage. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजविंदर सर, जी सर। इसमें एफ ए आर 3.84 हम कह रहे थे यूज किया हुआ है, जी और कवर्ड प्लॉट एरिया है हमारा 37,500। अगर उसको 3.84 से करते हैं तो हमारा सर, एरिया। जी। सर ये सारी चीजें फिक्टिशियस है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। चलिए, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा बन रहा है, सिर्फ 171 जो हमने लिया है उससे हाँ तो जी, सारी कैलकुलेशन ही चेंज हो जाएगी सर। वो जस्ट एक फिक्टिशियस आपको बताया गया कि सारी चीजें चेंज कर दी गई है एक्चुअल से। चलिए चलिए, ठीक है ठीक ठीक है ना, आपने आपको प्रोसीजर बताया गया है कि ऐसे करना है। ठीक ठीक। 317 पॉइंट। फिगर फिगर मत देखिए सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन किस तरह से की गई है स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करिए। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वैल्यू डिफर कर सकती है, और जानबूझ के यहाँ से कुछ चीजें हटाई गई हैं जो रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड थी। तो जैसा आपको डिस्क्लेमर पहले दिया गया था, फिक्टिशियस है, इसमें कुछ भी रियलाइजेबल कुछ भी रियल कुछ भी नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, और उसको दिखाकर आपको स्टेप समझाने की कोशिश की गई है और कुछ भी नहीं। यस सर, एनी अदर डाउट? सुरेंद्र सर, टिंडवाल सर, आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर। एक सर, ये जो बैंक वाले तो कहते हैं कि भाई जो है ना, हमने तो लोन करना है इनका, आप उस पे सुपर एरिया पे करके, और जो है ना, ताकि इसका लोन पूरा हो जाए, आप उसकी वैल्यू उस हिसाब से करके दे दो। जबकि रेरा कहता है कारपेट एरिया के ऊपर है जी। सर आप रेरा को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है कि रेरा का जो भी डेवलपर ने डाटा दिया है आपको, मेरे को, किसी को, कोई, वो सारा रेरा की वेबसाइट पे अपलोडेड है। दैट इज डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आप उसके अगेंस्ट कैसे जाओगे? कोई और डॉक्यूमेंट होगा वो तो आप हाइड भी कर सकते हो, अब वेबसाइट पे पड़ा है उसको कैसे हाइड करोगे? एक सर मेन प्रॉब्लम क्या है, जो आप सर बार बार के सेल्स कंपेरेबल की हम जो बात करते हैं सर, अब जितनी रजिस्ट्रियां होती हैं, अगर हम रजिस्ट्री वाली बात करें तो वो जस्ट स्टाम्प ड्यूटी के इर्द गिर्द, मतलब 10-5 मतलब ऊपर ही, थोड़ा बहुत ऊपर, मतलब उसके मार्जिनली ऊपर होती है। तो वो तो उसमें तो और मार्केट वैल्यू में तो बहुत फर्क पड़ जाएगा सर। वही तो सर देखना पड़ता है, आपको मार्केट में घूमना पड़ता है, वहां पे जो उस एरिया में डेवलपर है, उस एरिया में जो रियल एस्टेट एजेंट है, उस एरिया में अगर कोई ऑक्शंस हुई हैं, वो सारा डाटा आपको ये एक वैल्यूअर्स ने आपका डाटा बैंक बनाना, वो आपकी ड्यूटी है सर। अब बैंक्स कहते हैं सर, अगर आपने मार्केट वो सर्कल रेट ही लेना है तो उनको फिर आपकी जरूरत। सर मैं वही बता रहा हूँ, अगर सर्कल रेट नहीं लेना है, आपने मार्केट रेट लेना है, तो मार्केट रेट ड्राइव कैसे करना है वो तो आपने ही देखना है।
अभी देखिए कल सर, को एक एग्जांपल और आएगी, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा सर कि अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो कैसे करोगे। देखिए आज जैसा का सर दिन ने रख लो, कल को एक एग्जांपल और पढ़ेंगे, उससे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि इनकम अप्रोच में कैसे जाना है। और इनकम अप्रोच में भी अगर आप डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन करते हो तो, और अगर आप डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड यूज करते हो तो क्या होगा। कोई देखिए सर ये प्रॉब्लम। नॉर्मली कल का मतलब सर टिंडवाल 20 तारीख की बात कर साहब, रहे हैं सर सर। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। टिंडवाल साहब, जैसा आपने बताया कि रिलेटेड जो रजिस्ट्रीज हैं या एविडेंसेस हैं हमें रिलेटेड ही कम से कम मिलेंगे, ऐसा नहीं है सर। अभी आप देखिए कुछ कंपनीज हैं जो परचेज करती हैं, वो तकरीबन तकरीबन रियल जो उनकी ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर परचेज करती है। डिपेंड करता है कि हम जब एविडेंस लेने जाते हैं तो किस तरह की एविडेंस हमें मिलती है। तो इसीलिए हमेशा रिलाय ये करिए कि मोर देन 5 to 7 ऑड नंबर्स में आप उनसे लीजिए, और कोशिश करिए जो ब्रांच है, रिकॉर्ड ब्रांच है, वहां पर आपका थोड़ा सा लिंक हो। तो जब आप उनको बोलेंगे कि आप मुझे उस एरिया की मुझे सेल डीड 5 या 6 बता दो, तो 5 या 6 बताएगा जिसमें वो ट्रांजेक्शन की अमाउंट भी होती है। तो उसमें से आप वो डीड उनको बोलिए फोटोकॉपी कराने के लिए, कि जिसमें आपको रियलाइज एक्चुअल रियलिटी के रिलेटेड वैल्यू मिले। ऐसा नहीं है कि सारी डीड्स सर्कल रेट के हिसाब से ही होती हैं। आजकल ज्यादातर जो कंपनीज है अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव करने के लिए या बैंक से लोन लेने के लिए या दूसरे ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्चुअल रजिस्ट्री भी करानी शुरू हो गई है। और धीरे धीरे ये पैरेलल इकोनॉमी है वो खत्म होती जा रही है इंडिया में ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। कुछ पॉलिसीज ऐसी अच्छी बनी हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। आगे आगे शायद सेंट्रल रजिस्ट्री सिस्टम और भी बड़ा कुछ होने वाला है, धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन अभी जब तक ये ट्रांजिशन पीरियड है, थोड़ा सा हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पर। और दूसरा, आप जैसा सर ने बताया, आप नियरेस्ट बिल्डर्स के पास आप जाइए, वहां पर थोड़ा बहुत पता चलेगा, और उनसे आपको हर एरिया में आपका एक ना एक सेल होना चाहिए जो आपको उस रिलेटेड आपको डीड दे दे। सिर्फ हमारा काम वैल्यूएशन का नहीं है, हमारा थोड़ा सा काम करमचंद का भी है। तो थोड़ी सी एक एक आपको इंटेलिजेंस एजेंसी भी एक उसकी सपोर्ट भी लेनी पड़ सकती है, ऐसा भी आप सोचकर चलिए। तो जब आप वहां पर मार्केट में थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, आसपास थोड़ा पता करेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। कोई भी चीज, कोई भी एविडेंस, कोई भी इन्वेस्टिगेशन सीधी नहीं होती। उसमें सारे एविडेंसेस आपके सामने होते हैं, बस आपको चूज करने होते हैं कौन से लेने हैं। तो जब आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वो आपको वहां पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम निकालकर वीक में, देखिए मेरे पास कोई काम नहीं होता फिर भी मैं हफ्ते में एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने से चला जाता हूँ सब रजिस्ट्रार ऑफिस। हाय हेलो करता हूँ, मिलता जुलता हूँ, 2 4 अजीनवीस के पास बैठता हूँ, चाय पीता हूँ, और कुछ ना कुछ वहां से मुझे इनपुट मिल जाता है। जो इनपुट मिलता है मैं एक डायरी रखता हूँ, वहां पर नोट कर लेता हूँ कि अभी कौन कौन सी, किस एरिया में कौन सा रेट चल रहा है, किस एरिया में ज्यादा रजिस्ट्रियां हो रही हैं, किस एरिया में क्या चल रहा है, ये चीजें हैं। तो ये एक मतलब कहीं भी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये आपको अपनी डेवलप करना पड़ेगा, अपना डाटा बैंक डेवलप करना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी डीड आती है, मैं उसका डीड नंबर, डेट और रजिस्ट्री नंबर और सारा और उसका अमाउंट नोट कर लेता हूँ एक रजिस्टर में। कल को 10 साल बाद अगर उस एरिया की कोई डीड आती है, तो मुझे वहां से डाटा निकल जाता है कि मैं ये डीड की रजिस्ट्री मैंने की। आप अगर 10 15 वैल्यूशन कर रहे हैं महीने में, तो 15 का डाटा तो आपके पास आ ही रहा है ना फ्री में। धीरे 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 डाटा बैंक आपका बड़ा होता चला जाएगा। तो पहले हम मैनुअल करते थे, अभी उसको हमने इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेल पर डाल दिया है। तो धीरे धीरे जब आप एक्सेल में सर्च करेंगे लेटेडी मॉडल टाउन, तो मॉडल टाउन लिखेंगे, मॉडल टाउन की जितनी डीड्स आपने वेरीफाई की होंगी सारी आ जाएंगी। और उसमें जरूरी नहीं है, उसके हो सकता है लाजमी है कि उसके बाद कोई ना कोई सेल हो चुकी हो। तो वहां पर आप सब रजिस्ट्रार को बोलोगे भाई मॉडल टाउन में ऐसी प्रॉपर्टी थी, इस तरह की थी, मैंने तब देखी थी, आज की डेट में उसका क्या है। तो बता देगा हाँ ये सेल हुई है और इसका ये इस रेट पर सेल हुई है। तो आपको इमीडिएट सेल कंपैरिजन डाटा मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्स्ट इस्तेमाल करने पड़ेंगे, थोड़ा सा जासूसी वाली किताब पढ़िए, काफी कुछ सोचने को मिलेगा उसमें। यस सर, ओवर टू यू, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर हम जरा बात करें। हेलो। यस सर, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मैं बीडी गुप्ता बोल रहा हूँ। यस सर। सर हमने 3 क्वेश्चन करने का है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने बताया नया फॉर्मेट जो आया हुआ है, जो फॉर्मेट आया हुआ है वो क्या है? कौन उसको आप लोगों ने बनाया या आईबीबीआई बनाया?
सर देखिए, इसके लिए पूरा एक सेशन पिछले हुआ था, मे बी आपने अटेंड नहीं किया होगा। उसके हाँ रिलेटेड एक हाँ वीडियो हमारे हाँ यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, और उसके रिलेटेड एक न्यूज में भी cvnews.in में भी एक रिलेटेड पूरा का पूरा लिटरेचर पड़ा हुआ है। अच्छा, नहीं और खाली ये मैं एक लाइन ये पूछनी है फॉर्मेट सर। मैं बता रहा हूँ सर, पूरा बता रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस हाँ रखिए। हाँ ये पूरा फॉर्मेट हम कोई नहीं है बनाने वाले, ना ही कोई आदमी बना सकता है। ये हाँ अथॉरिटी की तरफ से सजेशन दिया गया था, और आपसे भी सजेशन मांगे गए थे। हाँ हाँ और वो हाँ। सजेशन हमने आपको यहाँ पर फ्लोट भी किए थे कि इतनी तारीख तक सजेशन आपको देने हैं। आईबीबीआई के वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्मेट उन्होंने ड्राफ्ट हाँ हाँ, किया वो है। आई भी दिया, हमको याद आ रहा है। अब वो फाइनल हो चुका है, और उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वो भी हमने cvnews.in में डाल दिया था और पब्लिश भी किया। सब याद आ रहा है, ये याद आ गया, याद आ गया। जी। हाँ ठीक है ठीक है, तो वो आई भी फॉर्मेट, से। उस फॉर्मेट के ऊपर भी सर हम लास्ट में ये जो 4th डे होगा ना सर, हम वो भी लेंगे। हो सकता है आप मिस कर गए हो क्लास, जरूरी नहीं है सभी ने अटेंड नहीं की नहीं, हो ठीक है हो सकता है मिस हो गई हो। देखिए, हमारा नहीं पर्पज नहीं, ये ठीक है, अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया होगा जो कोर्ट केस के ऊपर था, जिसमें राम बालक प्रसाद जी और विजय कुमार सिंह जी आए थे। नहीं, वो तो अटेंड किया था हाँ, हमने। उसमें क्या सभी ने नहीं किया होगा सर, मैं उनके लिए भी थोड़ा सा बता रहा हूं कि हाँ अगर कोई हाँ कोर्ट केस होता है, देखिए उन्होंने 12 साल या 6 साल फेस किया है। और जिस वक्त केस हुआ, बैंक ने केस किया उनका इंक्वायरी के लिए, और स्टेट विजिलेंस का हुआ या एंटी फ्रॉड स्क्वाड का हुआ, वो इमीडिएट आ गए और उनका सारा कुछ उठाकर ले गए। और देखिए कितने साल वो अपने घर में भी नहीं सोते थे कि रात को पुलिस ना उठाकर ले जाए, और कितना उनको फेस करना पड़ा। और जैसे ही ये नाम आता है कहीं भी, तो आपके यहां पर एक चिप चिपक जाती है कि इसने गलती की है। आपसे सब बैंक दूर हो जाते हैं, आपसे सब रिलेटिव दूर हो जाते हैं, आपके इवन घर के लोग, आपके रिलेटिव आपको सस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं इसने क्या कर दिया। अमिताभ बच्चन का फिल्म था ना, यहां पर लिखा हुआ था, एक बड़ा फेमस फिल्म था, नाम मैं नहीं लूंगा, तो ठीक है। तो वो जो एक मेंटल स्टेज है 5-6 साल, जो आपका डर का, अभी उन्होंने केस फाइट किया, जरूरी नहीं है कि हर आदमी हाईकोर्ट में जाके फाइट करे, या हर आदमी का इतना अच्छा किस्मत हो कि कोर्ट का डिसीजन आपकी फेवर में आ जाए। वो जो डिफेंड करना और वहां तक पहुंचना जो मुश्किल है। मिस्टर मेगन, मिस्टर मेगन, एम आई ऑडिबल टू यू? मिस्टर मेगन, मिस्टर मेगन, एम आई ऑडिबल टू यू? मिस्टर मेगन, लास्ट कॉल फॉर यू बिफोर योर रिमूवल। मिस्टर मेगन, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके, गुड बाय। तो देखिए, वो जो स्टेज है, वो मेंटल जो स्टेज है जिस दौरान आप 5-6 साल गुजरते हैं, वो इतना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है उस स्टेज से गुजरना। हर आदमी आपको शक की नजर से देखता है, आपका सारा कुछ स्टेक पर होता है। 15-16 लाख रुपए आपके लग चुके होते हैं। मैं फिगर को एक फाइनल काउंट नहीं कर रहा हूं, किसी ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट या कभी कभी आगे भी जाता है, सीबीआई में भी केस चला जाता है, अगर बड़ी अमाउंट है, अगर उसके पैरामीटर में आ रहा है, तो वो जो एक ट्रांजिशन स्टेज है, जिस स्टेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, अगर वो भगवान ना करे आपको कभी फेस करनी पड़े, हमारा पर्पस यही है यहां पर ये चीजें बताने का, कि आपको एक्सीडेंट होने से पहले आपको पता हो कि कहां पर आगे पत्थर पड़ा हुआ है। अगर फिर भी आपका मन करता है कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी उस पत्थर के ऊपर चढ़ाऊंगा ही चढ़ाऊंगा, टायर फटे चाहे मेरा सर फटे चाहे मेरा हाथ टूटे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी सब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उसके लिए बने हैं जो सही काम कर रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक आउट ऑफ द पिक्चर एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सेक्शन 302 आईपीसी का है, उसमें आपको, अगर आप किसी को चाकू मारते हैं तो आपको सजाए कुछ भी मिल सकती है उसके अंदर। आप अगर किसी को चाकू मारते हैं, किसी को खून करते हैं, किसी को अदर तरीके से करते हैं, तो उसका सजा मिलनी तय है। अगर एक बैंकर बोलता है कि भाई आप जाकर उसको चाकू मार दो, मैं बोल रहा हूं आप मार दो, मैं तो तब आपको फीस दूंगा, तो क्या आप मार देंगे? और मारने के बाद अगर कल को कोर्ट में गया और आपके खिलाफ एविडेंस मिली, क्या आप बच जाएंगे? तो जो बैंकर की बात मान रहे हैं कि सुपर एरिया पे वैल्यू दो या वो दो, वो बेसिकली उसी एग्जांपल से आपको रिलेट करिए। वो आपको बोल रहा है कि आप खून कर दो, और आपको पता है कि कानून में उसकी सजा है, फिर भी आप खून करने के लिए तैयार है 1000 या 2000 रुपए के लिए, तो कौन जिम्मेदार होगा? हु विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज? बैंकर फेस करेगा या आप करेंगे? बैंकर को बोले सर लिख के दीजिए, मैं सुपर एरिया पे करनी है, मैं कर दूंगा। आप अपने सिर क्यों मौत लेते हैं? अपना फांसी पे झूलने के लिए 1000-2000 के लिए क्यों उसकी बात मानते हैं? आज नहीं तो कल प्रॉब्लम में आएंगे। और ये प्रॉब्लम आसान नहीं, छोटी नहीं है। अभी अभी तक सब इग्नोर होता था, अब गवर्नमेंट्स या बॉडीज या दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ऐसी नहीं है। अभी देखिए, कल ही परसों मैंने एक वीडियो आपको भेजा है, फ्रॉड्स
फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फ्रॉड्स, उसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज क्या क्या करती हैं वो भी आपको बताया गया उस वीडियो में। अगर आप देखते होंगे, अगर आपने देखा होगा तो आपको डरना लाजमी है, डर होना चाहिए। नहीं है तो आपकी मर्जी, आप सामने पत्थर पड़ा हुआ बोलिए मैं तो इस पर टकरा कर ही जाऊंगा भाई, कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक है आपकी मर्जी है। कभी किस्मत अच्छी भी हो सकती है, हो सकता है आपके गिरने के बाद वहां पर 1 लाख रुपए का बंडल पड़ा हुआ आपको मिल जाए, चोट भी ना लगे, बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। तो ये आपकी मर्जी है कि आपको चलना है नहीं चलना। हम सिर्फ आपको एसओपी बता सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब वो ऐसा कर रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है, दुनिया में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया था, उसने ऐसा किया है। देखिए ये सो मेनी एक्सक्यूजेज हैं, इससे आप बचने वाले नहीं। अगर फंस गए तो बुरी तरह फंसेंगे। और उनका अगर आप वीडियो देखें जो पिछले हुआ 6-7 साल, क्या उनके लिए मेंटल प्रेशर रहा, उनके लिए कितना जीना मुश्किल रहा होगा। आज की रेट में ठीक है, लेकिन वो 6-7 साल दुनिया में, जिंदगी में वो वापस नहीं मिलेंगे उनको। हो सकता है आप जीत जाएं, हाई कोर्ट में आपको सब कुछ मिल जाए या सब कुछ वापस हो जाए, लेकिन वो 6-7 साल जो गुजर चुके हैं वो जिंदगी के चले गए। सभी बैंकों ने आपको डीपेनल कर दिया, सभी रिश्तेदारों ने आपको शक्की नजर से देखना शुरू कर दिया। आपके पड़ोसी, जब आपको पुलिस उठाकर लेकर गई है, पड़ोसी भी आपको देख रहे हैं। और उसके बाद में आपके आपके फैमिली को, आपके बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो गया, आपके वाइफ को आपके किट्टी पार्टीज में जाना मुश्किल हो गया। क्या कौन जवाब देगा उसको 6 साल का? क्या 6 साल बाद सब वो रिवाइव हो जाएगा? बेटर है अभी 10 मिनट फालतू टाइम अटेंड कर लीजिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो ये सिली क्वेश्चंस आप यहां पर ना पूछते। नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब चैनल पर जाइए, वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। उनके साथ क्या गुजरी, ये एक एग्जाम्पल है। देखिए दूसरे के फुटप्रिंट्स हमें दिखाने का फायदा ये है, और सबसे बड़ी बात है वो लोग आए थे जिनके साथ ये हादसा हुआ है। हम कोई एग्जाम्पल देकर नहीं बात कर रहे थे। वो लोग थे, वो एडवोकेट थे जिन्होंने केस फाइट किया है। वो लोग थे जिनको बैंक का नोटिस आया, उनको पुलिस ने ये सारा को इन्वेस्टिगेट किया, क्या क्या हुआ, वो असली चीज आपको बता सकते हैं। और अगर आप उनका एग्जाम्पल लेके नहीं समझना चाहते, देन वी आर सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपको एसओपी बता सकते हैं, ये लिखा हुआ है। अगर आप किसी को चाकू से मर्डर कर देंगे, गला काट देंगे, तो उसकी सजा ये होगी। अब आप बोलेंगे यार उसने भी काटा था, दाऊद ने भी काटा था, उसको तो नहीं हुआ। वो फला आदमी भाग के विदेश चला गया, उसको तो नहीं हुआ। उस आदमी को तो एविडेंस नहीं मिला, उसका तो फांसी नहीं हुई। अब हो सकता है वो उन्होंने कोई अच्छे काम किए हों, या हो सकता है उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की हो, लेकिन आपको इतनी अपॉर्चुनिटी ना मिले, या आप इतने आप फॉर्चुनेट ना हो, तो क्या होगा? बेटर है घर से निकलने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस हो, हेलमेट लगा हो और गाड़ी के सारे कागज हो, तभी ड्राइव करिए। नहीं तो गाड़ी तो वो भी चलाता है जिसकी चोरी की गाड़ी है, वो भी चलाता है और ज्यादा स्पीड से चलाता है, बढ़िया चलाता है, उसको कोई पकड़ता भी नहीं है। लेकिन हो सकता है पकड़ ले, जिस दिन पकड़ ले फिर क्या होगा? सर हम ऐसा मत दूसरा करिए। पूछते हैं। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन बताने का ये फायदा है कि आप उसको फॉलो करें, करें या ना करें, करेक्ट हम आपको करेक्ट कंपल्शन नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी करेक्ट करेक्ट ठीक है संदीप जी। ओवर टू यू सर। Sir, सर I want हमारा to ask तो इसके something. बारे आज की जो है प्रेजेंटेशन, उसके बारे में अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए जो पर्सनल है, जहाँ कोई प्रैक्टिकल है, तो दैट इज डिफरेंट इश्यूज। बिल्कुल, वो जो बहुत Sir, बड़ी आज sir, एक यूडीएस चीज पढ़ा है पूछनी है. उसके हो जाएगी, रिगार्डिंग कोई फायदा नहीं। यस सर। Sir, I just want a small question. ये क्या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूडीएस जरूरी है? सर सभी जगह होगा, इट मे बी रेजिडेंशियल और इट मे बी कमर्शियल, so it depends upon the type of the project. Okay, thank you. एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर एक रिक्वेस्ट ये मैंने बंसल सर से डाली थी कि मुझे वो एंगेजमेंट लेटर जो है ना, जो बैंक में भेजना है या जिसमें, वो उसके लिए सर से मेरी सॉरी, request है सर। मैं मिस कर गया सर, सॉरी। आपने डाला जरूर था, लेकिन मैं उस दिन ट्रेवल कर रहा था, मैं नहीं देख सका, और बाद में मेरे माइंड से निकल गया। अच्छा कि आपने याद करा दिया, मैं आज ही आपको डाल देता हूँ। सर वो मैं डाउनलोड नहीं हुआ नहीं, मेरे से। डाउनलोड नहीं होगा सर, एक्चुअली वहां पर वो ट्रिगर लगा हुआ है। मैं जी जी, आपको उसको वर्ड में कन्वर्ट करके मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, सबके फायदा हो जाएगा। सबको फायदा हो जाएगी। हाँ, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। सॉरी, वेरी सॉरी, रियली सॉरी, मैं मिस कर गया, मेरे माइंड से निकल गया था। थैंक यू सर, थैंक मैं आज ही कोशिश करता हूँ उसको कन्वर्ट करके वर्ड में, क्योंकि वो एक्चुअली वेबसाइट पे वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, वो मुझे यू। भी जी जी, डाउनलोड नहीं होता है, और मैं ओके। उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो क्योंकि वो पेस्ट किया हुआ है, अगर वो पीडीएफ में होता तो आप डाउनलोड कर सकते थे, वो पीडीएफ में नहीं है, पेस्ट है वॉल के ऊपर। तो मैं उसको वर्ड में कन्वर्ट करके आपको आज ही कोशिश करता हूँ डालने की। 2 उसमें अलग अलग ऑप्शन है,
दोनों एक ही बार फाइल में डाल देता हूँ। थैंक यू 100% हो जाएगा सर। थैंक यू सर। जी ओके सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सर एक क्वेश्चन था जी सर। सर, जैसे सेल डीड यदि सुपर बिल्टअप एरिया की हुई है, रेरा कहता है कि कारपेट एरिया कंसीडर करना, तो उस केस में अपन को क्या करना चाहिए सर? सर कारपेट अगर एरिया कंसिडर करना है, रेरा की आपने कारपेट एरिया ही करना है। सेल डीड यदि सुपर बिल्टअप की हुई तब भी? सर आप अपने हिसाब से दोनों के हिसाब से वैल्यूएशन करके दे दो। अगर आप जी बैंकिंग के लिए कर रहे हो तो जी जी, बैंकिंग के लिए। दोनों के लिए करके दे दो। अब बैंक वालों ने जो करना है वो कर ले। अगर आप तो किसी के लिए सेल परचेज के लिए कर रहे हैं, फिर तो जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो उस हिसाब से दे सकते हैं। मेंशन कर क्योंकि सकते आज की डेट में जो है रेरा कहता है कि बिल्टअप एरिया नहीं लेना, सुपर बिल्टअप एरिया नहीं लेना, कारपेट एरिया लेना है। तो कारपेट हम एरिया। रेरा के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जी ठीक है ना, जो आज का कानून है हमें वो तो फॉलो करना ही है। अब जिस दिन वैल्यू सेल डीड हुई थी उस दिन कोई कानून नहीं था। जी ये ठीक भी है, आप दोनोों तरीके से वैल्यूएशन करके दे सकते हो, इसीलिए मार्केट नहीं सर, अप्रोच अभी भी जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियां हो रही हैं उसमें सुपर बिल्टअप के हिसाब से ही स्टाम्प ड्यूटी ले रहे हैं एमपी वो में। लेते रहे, अभी उनसे कुछ लेना देना जी नहीं है। हमारी जो वैल्यूएशन वो डिपेंड करेगा किस पर्पज के लिए। अगर आप कोई सेल परचेज के लिए करें तो ठीक है, वो तो उसी हिसाब से चलोगे जिससे रजिस्ट्री होती है। अगर आप बैंकिंग के हिसाब से चल रहे हो तो फिर तो लॉ आ गया ना। तो लॉ कहता है कि रीरा चलेगा, रीरा कहता है कि कारपेट एरिया चलेगा, तो फिर हम उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक। वो कोई मानता है नहीं मानता वो उस पर डिपेंड है, हमें कुछ लेना देना, हमें तो लॉ फॉलो करना है। ठीक, थैंक यू। थैंक यू जी। Yeah. Any other related question to today related to today's presentation? कोई भी हो तो पूछ सकते हैं। नो सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सुदीप जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Yeah, thank you very much, sir, for your valuable inputs and for your this presentation. And one Thank more. you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. One more announcement that is unofficial announcement. मैं एक मिनट